Hello guys, welcome back to day 11 of ACCFR batch. Today, our plan is to complete the entire consolidation chapter. So, without wasting much time, let's get started. What is consolidation? Any idea? What you have learned in F3? Any idea? Anything you want to bring on? Um, Consolidation is basically when we uh, merge two companies, that is one parent company and one subsidiary company owned by a parent company, Mhm. both of their financial statements, and make it as a one group, whole group financial statement. Mhm. Perfect. And any idea why are we doing that? I mean, why are we merging two company financial statements? Basically, to show a kind of fair, fair and true view when the owners Basically, or basically, any. when the stakeholders want to view any company's entire picture, they have this will in this the consolidation statement which will help. They will help it out. Correct. Yeah. This will help them understanding the entire performance by the group. Okay. Hmm. What is the concept of group financial statement? What is a group? If a company owns more than 50% of the ordinary share capital of another company, again I'm saying कि ये जो है this is just an idea कि okay 50% होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि 50% ही हो. इट कैन बी मोर देन 50, लेस देन 50. Okay. और अगर लेस देन 50 है फिर भी कंट्रोल आ सकता है दूसरे कंपनी से. कंडीशन हम पढ़ेंगे बट आ सकता है. तो देयर इज नो रट्टाफिकेशन कि अच्छा मोर देन 50 है तो ही कंट्रोल आएगा. देयर Hmm. इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल ऑफ दैट. बट या मेजोरिटी ऑफ द केसेस में 50% ओन है तो कंट्रोल आ जाएगा. Okay. ठीक है. बट इट्स नॉट अ थंब रूल कि 50% है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्रोल आ गया. ठीक है. Right. If one company owns more than 50% of ordinary share capital of another company, this will usually what? This will usually give the company, the first company, control of second company. ठीक है. Hmm. The first company, which was the parent one, has enough voting power to appoint all the directors of another company. Basically उसके पास voting rights है. Do you know voting rights? AGM, any idea? AGM, annual general meeting में हम usually we appoint directors and based on that we take Yes. decisions, anything. Yes. Yes. तो जो पेरेंट कंपनी है हैज द मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स. तो उसकी वजह से क्या है कि दे कैन अपॉइंट majority of the director. For example, a company needs company has four director and has to appoint four directors. Or parent company owns 75% of second company, basically the subsidiary one. So there is 75%. मतलब out of four directors, three directors will be appointed by parent company. Okay. One होगा that is a different one. ठीक है. तो इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय कंपनी. इसका मतलब पेरेंट कंपनी गॉट द कंट्रोल. ठीक है. कहीं ना Okay. कहीं मिल रहा है ना कंट्रोल की नाउ उसके डिपेंडिंग अपॉन डिसीजन टेकन बाय पेरेंट कंपनी द सेकंड कंपनी विल ऑपरेट. ठीक है. Right. क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पावर आ गया. डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में हो गई सब कुछ. इवन इफ कंपनी ए इज सेइंग कि हम कंपनी पी सेइंग बेसिकली द पेरेंट वन की विल टेक डिसीजन by A plan, but the one director which is not appointed by company P is saying no, we'll go by plan B. But because we have the majority, the company has to operate as per plan A. ठीक है. Right. P is able to manage. P is able to manage as if it were merely a department of P rather than a separate entity. इसका मतलब क्या है? P is able to manage S, basically the subsidiary one,
एज इफ क्या, एज इफ इट वेर मेरली अ डिपार्टमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी, मतलब खुद का ही डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे उसको। इसका मतलब Hmm. कि खुद का ही डिपार्टमेंट है तो खुद के तरीके से ही चलाएंगे कंपनी। ठीक है। Yes. रादर देन अ सेपरेट एंटिटी, a strict legal terms, P and S remain distinct, but in economic substance, they are regarded as a single unit, basically a group. मतलब लीगली कंपनी के ओनर्स अलग अलग है, ठीक है, Hmm. प्रोमोटर्स बेसिकली, बट सब्सटेंस और फॉर्म आज की, बट दे विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ग्रुप। दे विल इशू इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल, उनके खुद के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट एज अ ग्रुप भी ट्रीट करेंगे बाय फॉर्मिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। उनकी लीगल टर्म्स डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, बट इन इकोनॉमिक सब्सटेंस दे आर कंसिडर्ड a single entity because P control S. So technically it is a company of P only. ठीक है। Hmm. You understood, right? What is group? Yeah. Let's read the group concept. Although the legal point of view of every company is a separate entity. Every company is separate entity from legally point of view के सब एक एक distinct entity है, सबके each and every सबके खुद खुद के different different norms हैं, ठीक है, policies हैं, but from a economic point of view they will be considered as the one entity. How? In particular, one company owns enough number of shares of another company have a majority vote that the company's annual general meeting, the first company may appoint all the director of and decide what dividend to be paid by the second company. इसका मतलब, जस्ट आई एम गिविंग यू एन रियल लाइफ एग्जांपल कि ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, दिस इज कंडक्टेड एनुअली, Hmm. वहां पे कंपनी के मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। हियर इट्स गिवन एग्जांपल ऑफ डिविडेंड, बेसिकली डिविडेंड भी एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। डिविडेंड इज गेटिंग अप्रूव बाय द डायरेक्टर्स कि कितना डिविडेंड हमें पे करना है। डिविडेंड बेसिकली रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो कितना पर शेयर के हिसाब से कितना डिविडेंड पे करना है, दैट इज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स ऑन एजीएम। पर वहां पे चार में से तीन डायरेक्टर तो हमारे ही हैं। Hmm. तो चार में से तीन डायरेक्टर कह रहे हैं कि नहीं 10% डिविडेंड पे करेंगे। आउट ऑफ फोर, one is saying नहीं हम 20% पे करेंगे, because we have the majority of the directors saying 10% dividend will be approved by 10%। Right. ठीक है। This degree of control enables the first company, basically the parent one, to manage the trading activity, basically the operation, future plans of second company as if it were merely a department of first company। समझ आ गया? बेसिकली खुद का ही डिपार्टमेंट है। Hmm. फ्यूचर प्लान्स हम डिसाइड करेंगे, उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी डिसाइड करेंगे, ऑपरेशंस डिसाइड करेंगे, डिसीजंस हम लेंगे, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसका डिसीजन हम लेंगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव द कंट्रोल। तो अब Right. कंट्रोल आ गया, वी आर द वन एंटिटी, इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंपनी ओनली, rather than separate entity, that's what it's saying। ठीक है। Right. IFRS accounting standard recognizes situation requires a parent company to produce। ठीक है। IFRS standard saying in order to recognize this situation, entity has to produce consolidated financial statement to show the position and result of a whole group as of one। ठीक है। Yes. Now let's understand the definition of the standard. What does definition say? Definition is saying कि as per IFRS 10, and for one more thing, you don't have to remember all this IFRS is, ठीक है, but since you will do all these questions, all this standard, and you will revise multiple times, like Hmm. byproduct, you will end up remembering all the name of standards। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि याद रखना है, ऐसा कुछ Okay. एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हो कि याद करना है, ठीक है। Okay. बट इतना टाइम रिवाइज करोगे, यू विल डू क्वेश्चंस, तो बाई याद प्रोडक्टली रहेगा. एंड अप, हाँ करेक्ट, Hmm. यू विल एंड अप रिमेम्बरिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स। Hmm.
parent company. Who is the parent company? The entity that controls one or more entity. The basically the controller, Hmm. ownership, investor. ठीक है. Subsidiary क्या है? An entity that is controlled by another entity, basically the parent one. Hmm. And control over investee. Control कैसे आएगा? An investor controls an investee when investor is exposed, has the right to variable return from its involvement in investee, has the ability to affect return through its power over investee. बहुत टेक्निकल है, ब्रेक कर. कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी. कंट्रोल कैसे आएगा? An investor, basically the parent one, Hmm. controls an investee through subsidiary. When the investor is exposed क्या? और has right. एक्सपोज हो चुका इन्वेस्टर, पेरेंट कंपनी एक्सपोज, और राइट है उसके पास. क्या राइट है? टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी. वेरिएबल रिटर्न मतलब जो प्रॉफिट होगा, Hmm. वेरिएबल रिटर्न होगा इन प्रॉफिट के ऊपर, उसके पास राइट है कि उसको वेरिएबल कर सके. मतलब इसका मतलब डिसीजन कुछ लेना है, कुछ कोई डिसीजन नहीं लेना है, कितना डिविडेंड इशू करना है, ये डिसीजन से हमको इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, ये इंडस्ट्री में घुसते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो रिटर्न वेरिएबल हो रहा है ना, कभी कम कभी ज्यादा, बेसिकली उसके हाँ. पास राइट है. Yeah. तो पेरेंट कंपनी इज एक्सपोज and has right, what right? To variable return from its involvement with the investee. And who is the investee? The subsidiary. Hmm. तो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट आने के बाद, Yeah. और and has ability to affect the return through its power over investee. और अफेक्ट कैसे कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल, ये सब रिटर्न देखा कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में घुसना है, क्या क्या प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं, कितना डिविडेंड इशू करना है, तो उसके पास राइट है कि वो अपने वेरिएबल रिटर्न को अफेक्ट कर सकता है. आज वो बोलेगा नहीं, अभी माई वन ऑफ माई सब्सिडियरी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, आई डोंट वांट एनी डिविडेंड. तो कहीं ना कहीं इट्स अफेक्टिंग पेरेंट कंपनी. Yes. बट वो वो अपनी एंटिटी की तरह ही ट्रीट कर रहा है ना उसको. ही इज टेकिंग द डिसीजन कि नहीं चाहिए तो ठीक है, अब अभी नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं आ जाएगा इन फ्यूचर, अगर इफ वी कंटिन्यू ग्रो फर्दर. Hmm. तो अभी माई रिटर्न इज लो, बट नेक्स्ट ईयर रिकवर हो जाएगा. तो कहीं ना दिस इज द वेरिएबल इन द अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर यूज इज पावर ओवर इन्वेस्टिंग. ठीक है. Right. डिसीजन में और बहुत चीज आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फंड की जरूरत है तो कैसे फंड रेस करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल रेस करना है, Hmm. फाइनेंशियल लायबिलिटी, बॉन्ड इशू करने हैं, IFRS 9, बॉन्ड इशू करके पैसे लेने हैं पब्लिक से, फिर रिडीम रिडीम कर देंगे, लोन लेना है. ठीक है. अगर कोई Okay. एसेट परचेस करना है, फिर भी डिसीजन लिया जाएगा बाय द पेरेंट कंपनी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, क्या असेट ओन करना है, क्या असेट लीज पे लेना है, दैट इज द बेनिफिशियल ऑप्शन, कौन सा बेनिफिशियल होगा. ठीक है. बेसिकली Hmm. एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन, एडमिन स्टफ एंटायरली, ऑल द डिसीजन टेकन बाय पेरेंट कंपनी. सब कुछ फाइनेंस वो देखेगा, ऑपरेशंस देखेगा, लॉजिस्टिक्स वो देखेगा, सब कुछ. बेसिकली द एंटायर डिसीजन इज टेकन बाय पेरेंट कंपनी, एज इफ इट्स कंसिडर्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी. Right. इट्स नॉट डिपार्टमेंट बट स्टिल कंसिडर एज अ डिपार्टमेंट. आई मीन मतलब समझने के तरीके से कि इट्स डिपार्टमेंट ही है, उसका खुद का ही डिपार्ट, तो वो उसी तरीके से डिसीजन लेगा. Okay. ऑल्दो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सेपरेट एंटिटी, बट इट्स ओन बाय पेरेंट कंपनी. तो Hmm. स्टैंडर्ड से हमें कंसोलिडेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. हाँ. ठीक है. वन मोर थिंग, अगर कंट्रोल आ गया तो कंसोलिडेशन इज नथिंग की रूल है. कंसोलिडेशन एक प्रोसेस है, बेसिकली अकाउंटिंग स्टेप है. कि Hmm. अगर कंट्रोल आ गया तो कंसोलिडेशन इज अकाउंटिंग मेथड गिवन बाय IFRS, रिलेवेंट IFRS, कि हमें कंसोलिडेशन के थ्रू उसे ट्रीट करना है. बेसिकली कंसोलिडेशन का मतलब मर्ज, कंसोलिडेशन का बेसिक मतलब होता है मर्ज कर देना. हाँ. ठीक है. Hmm. अक्यूमुलेटेड मर्ज. तो वही है कि अगर इफ somebody is controlling, तो there is no point of showing separate thing. It's better to show separate and also as a group as a whole. Right.
ठीक है। Yeah. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पशंस कि कौन से केस में हमें कंसोलिडेशन नहीं प्रोवाइड करना है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा इसका एमसीक्यू, तो मेक श्योर यू अंडरस्टूड द कंडीशन थारली। Okay. फर्स्ट, अ पेरेंट नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ, अगर कौन से कंडीशन में पेरेंट को कंसोलिडेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करना है। फर्स्ट, a parent itself is a wholly owned subsidiary or a partially owned subsidiary of its owner, including those not otherwise entitled to vote and inform not and do not object। बेसिकली इसका मतलब ये है, जस्ट सेकंड, या बेसिकली ये है कि अगर होल इफ इट्स अ होली ओन सब्सिडरी, तो ओनर को एग्री करना जरूरी है, सारे ओनर्स को, कि हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। नो बडी शुड ऑब्जेक्ट। Hmm. ठीक है, ये और दिस इज द की, एवरीबडी हैज टू अग्री, the parent not prepared, and nobody should object, what object, the to the parent non preparing conferred financial statement, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, द पेरेंट्स डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रेडेड इन पब्लिक, इसका मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी, Hmm. करेक्ट, जिसके स्टॉक्स लिस्टेड नहीं है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसका मतलब पब्लिक एंटिटी नहीं है, वो प्राइवेट प्राइवेट एंटिटी है। करेक्ट, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते स्टॉक मार्केट में, Hmm. Hmm. तो उनको देर इज नो रिक्वायरमेंट कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है, बट दे कैन डू। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड सिंह दिस इज एन एग्जाम्पशन वी आर क्रिएटिंग, बट अगर आप लोगों को करना है, वेल एंड गुड, यू कैन डू। Okay. The parent did not file its financial statement, parent, the company who is owing, ठीक है, Hmm. the parent did not file its financial statement with the Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in a trade floor। बेसिकली कि अगर कंपनी ने अपने आप को रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड फाइल नहीं किया हुआ है, खुद को रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली इसका मतलब भी यही है कि इफ इट्स, अगर, क्योंकि टेक्निकली क्या मतलब, अगर लिस्टेड होगा तो कहीं ना कहीं रजिस्टर भी होगा रेलवे स्टॉक एक्सचेंज में। फॉर Hmm. एग्जाम्पल इन इंडिया इट्स सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज Yeah. बोर्ड ऑफ, ठीक है, हाँ. स्टॉक मार्केट बेसिकली। तो वहां पे बेसिकली इन यूके एंड यूएस, देयर दिस स्टॉक एक्सचेंज नोन एज सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, सीईएस, Hmm. एसईसी, सॉरी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। ठीक है। अगर वहां पे अगर लिस्टेड है फॉर एग्जांपल उस स्टॉक एक्सचेंज में, इसका मतलब रजिस्टर होंगे तभी लिस्टेड होंगे। हाँ. करेक्ट। तो नीचे क्या लिखा होगा, रजिस्टर नहीं है, तो उसकी उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी ट्रेड नहीं होंगे पब्लिक में, लिस्टेड Hmm. नहीं होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब वो पब्लिक एंटिटी है, सॉरी प्राइवेट एंटिटी है। करेक्ट। Right. Right. लास्ट, द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी प्रोड्यूसेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट comply with IFRS, इसका मतलब है, I'll explain it. Which screen you can see? Excel. Basically, in real life, there is a umbrella of consolidation, umbrella of entity owned by multiple. For example, A company, A1, A2, A2, A, ठीक है, B1, B2, B2, C1,
B2. तो if you see, the main company who is owning all these three is A. ठीक है. Hmm. Hmm. A1, A2, A3 own. A1 is owing B1. A2 is A2 is controlling B2. A3 is controlling B3. B1 is controlling C1. B2 is controlling C2. B3 is controlling C3. ठीक है. You're getting the umbrella. तो कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक कि अगर बी भी तो एक पेरेंट है ना सी का. ये सारा बी का जो पूरा शीट है, आई मीन इज ओनिंग सी, राइट, कहीं ना कहीं. And it's a ठीक है. subsidiary as well. तो वो भी तो पेरेंट हुआ ना सी का. Hmm. बट बी का पेरेंट इज ए एंड ए का पेरेंट इज ए. ठीक है. यू गेटिंग क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. Yeah. तो कहीं ना कहीं बी भी पेरेंट है, तो अगर बी भी पेरेंट है तो उसको कंसोलिडेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, Hmm. इंक्लूडिंग ऑपरेशंस ऑफ बी एंड सी. And C. Hmm. अब ए को किसका प्रोवाइड करना पड़ेगा, बी. और बी के अंदर ऑलरेडी सी तो आएगा ही. और सी ए को सबको करना पड़ेगा बिकॉज ए इज कंट्रोलिंग A1 A2 A3 एंड टेक्निकली A1 A2 A3 कंट्रोलिंग बी एंड बी इज कंट्रोलिंग सी. गेटिंग. तो Right. अगर ए ही प्रोवाइड कर दे रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो किसी को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है फिर. नॉट नॉर ए, बी, किसी को प्रोवाइड करने की जरूरत. सी तो खुद ही सब्सिडियरी है, तो सी इज नॉट कंट्रोलिंग एनीवन, तो सी तो नहीं प्रोवाइड करेगा. बट ए और बी को रिक्वायरमेंट नहीं कर फुलफिल, बेसिकली नहीं प्रेजेंट करना है, क्योंकि ए, Already आ गया है. हाँ, ए इज द एंटिटी हु इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल स्टेट. Yeah, so as per the definition, the ultimate parent company, which is the हम्म. capital A, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. which makes the consolidated statements for all the other companies that हम्म. they own. परफेक्ट. These are the reasons to exclude the subsidiary. अगर the director is saying कि subsidiary is not performing good, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है, इंडस्ट्री में खराब है, सब्सिडियरी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, डिफरेंट सॉरी डेफरिंग अकाउंट एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडियरी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप. बेसिकली कंपनी पी इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, Hmm. बट जो सब्सिडियरी है वो क्लोथिंग इंडस्ट्री में है. तो पेरेंट कंपनी कैन नॉट से कि एक पेरेंट कंपनी से कि भाई दोनों की इंडस्ट्री अलग अलग है, वी वोंट प्रोवाइड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट इज रॉन्ग. इट्स नॉट अलाउड बाय आईएफआरएस कि ऑल इसके बेसिस पे यू आर excluding your subsidiary from the consolidated financial statement. You cannot exclude. हमारा मोटो ही क्या था प्रोवाइड करने का, टू शो कंपनीज ग्रुप परफॉर्मेंस एज अ होल. तो अगर आप खरा इफ यू विल एक्सक्लूड बैड परफॉर्मिंग एंटिटीज, बैड पोजिशन एंटिटीज फ्रॉम योर बुक्स, इसका मतलब ग्रुप एज अ होल का परफॉर्मेंस पता ही नहीं चल रहा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Hmm. करेक्ट. Hmm. That's why standard is saying this reason for excluding is not allowed. These reasons are not permitted under IFRS. ठीक है. Okay. एक्चुअल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अगर एक्चुअल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अगर सब्सिडियरी इज हेल्ड फॉर सेल, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यू अंडरस्टैंड IFRS 5. Hmm. तो अगर उसको सेल करने के लिए ही खरीदा हुआ है, बेचने के लिए खरीदा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिस केस विल come come under IFRS 5, and as per IFRS 5 you do not show into your basically the full year operations, but you will show as a single liner below statement of profit and loss Hmm. कि No. this was the total profit earned by discontinued operation. Right. ठीक है. तो उस केस में we can exclude from consolidated financial statement. और second, materiality. What is materiality? What do you understand by this term?
Materiality means we provide the material note or material information in the statement, like a kind of important information. Basically, what is materiality? Materiality is means anything which is significant for the company. ठीक है, करेक्ट। कोई भी चीज सिग्निफिकेंट है कंपनी के लिए, सिग्निफिकेंट एज इन कि अगर कुछ चेंज हुआ तो कंपनी इस चीज में, अगर कुछ रेवेन्यू में चेंज आया तो कंपनी में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो रेवेन्यू इज अ मटेरियल आइटम फॉर कंपनी। Right. ठीक है। तो अगर एज फॉर एग्जांपल कंपनी का टर्नओवर इज अराउंड 100 बिलियन डॉलर। ठीक है, आई एम सेइंग 1% इज मटेरियल। अगर उसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा चेंज आया कंपनी के ऊपर, दैट इज समथिंग आई थिंक दैट विल बी मटेरियल फॉर कंपनी। ठीक है, तो 1% कितना होता है? 1 बिलियन डॉलर। अगर 1 बिलियन डॉलर का कोई चेंज आया सडन, तो कंपनी को, फॉर दैट कंपनी इट विल बी मटेरियल आइटम। ठीक है। Right. तो अगर अगर द सब्सिडियरी जो मैंने परचेज करी है, उसका नेट असेट बेसिकली उसका वर्थ इज अराउंड 5 बिलियन डॉलर। ठीक है। तो अगर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या ये मटेरियल है फॉर दैट कंपनी और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? इट्स नॉट मटेरियल और मटेरियल कंपनी का, कंपनी से कि अगर 1 बिलियन डॉलर इज माई बेसिकली टॉलरेशन ट्रांजैक्शन, कि अगर कुछ सडन वन ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, टॉलरेटेड आइटम, हाँ. तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर $500 million का कुछ फर्क आया। बट अगर 5-6 बिलियन का फर्क आ रहा है, एंड आई डिसाइडेड कि मेरा मटेरियल इतना है, 1 बिलियन डॉलर के ऊपर कुछ भी जाएगा, दैट इज मटेरियल। तो $5 बिलियन इज मटेरियल फॉर दैट कंपनी। इसका मतलब उसको अकाउंट में लेना पड़ेगा, Right. कंसोलिडेट स्टेटमेंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट अगर उसका वर्थ बेसिकली नेट असेट ऑफ दिस कंपनी इज $0.5 बिलियन, तो फिर कोई तो फर्क नहीं. कंपनी कैन से कि आई कैन एक्सक्लूड इट, हम्म. इट्स नथिंग मटेरियल फ्रॉम माय एंड। Right. बट ऑल्दो ऑल दिस इज assumption, this is something which is assumption based। ठीक है। स्टैंडर्ड इज नॉट समथिंग एक्सप्लिसिटली सेइंग कि दिस इज दिस थ्रेशोल्ड, इसी के ऊपर जाएगा तो कुछ मटेरियल होगा, इमटेरियल होगा। और ये कंडीशन है कि सब्सिडियरी हेल्प फोर से मटेरियलिटी के हिसाब से यू कैन एक्सक्लूड एंटिटीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेट। हम्म. ठीक है। बट दिस इज समथिंग अजम्पशन बेस्ड कि अच्छा ये हो रहा है तो ये अच्छा ठीक है, वी कैन एक्सक्लूड। ठीक है। व्हाट इज सेइंग, डू नॉट स्पेसिफाई एनी अदर circumstances when subsidiaries must be excluded from, but however there may be specific circumstances that particular condition are as follows, which subsidiaries held for sale and material। this is the सब्सिडियरी हेल्प फॉर सेल तो परफेक्ट है कि अगर ये आ गया, कंडीशन मेट हो गया और उसको सब्सिडियरी हमने खरीदी क्यों है, वो फॉर सेल, हम्म. तो फिर तो ये IFRS 5 में आ जाएगा। तो दैट इज स्टेट फॉर IFRS 5 कि हमें उसको सिंगल लाइनर में शो करना पड़ेगा बिलो P&L। so there is no point of providing consolidated statement of finance। Right. बट अगर मटीरियल है, मटीरियलिटी तो समथिंग विच इज डिफाइंड बाय मैनेजमेंट ना। तो कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है कि मैनेजमेंट गलत मटीरियलिटी डिसाइड कर ले, उसके बेस पे कुछ सब्सिडियरीज को एक्सक्लूड करके उसके बेस, और इन फ्यूचर यूजर्स को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाए, स्टेक होल्डर्स को क्यों इम्पैक्ट आएगा? बेसिकली बैंक बैंक किसी को लोन देता है तो दे विल सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी। Right. ठीक है। इज देयर एनी इज देयर इनफ लिक्विडिटी हेल्ड बाय मैनेजमेंट टू रीपे द लोन? क्या इतनी लिक्विडिटी है, क्या इतने असेट्स हैं कंपनी के पास सो दैट कैन रीपे द लोन? कंपनी की रेपुटेशन क्या है?
ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर देखेगा तो उसकी पोजीशन देखेगा, कंपनी का लास्ट फ्यूल से प्रॉफिट कितना है, क्या पोजीशन है, इज दिस कंपनी इन्वेस्टेबल और नॉट, will it give me enough return in future if I'm investing X amount of money into this. So all this will impact company financial position. ठीक है। एक डिसीजन से यूजर्स को इम्पैक्ट आ सकता है, तो मटीरियलिटी इज समथिंग विच इज इट्स मच सब्जेक्टिव। तो बहुत रेयर केस है होना, बट सब्सिडियरी हेल्प फॉर सेल आ गया तो वो हम एक्सक्लूड करेंगे। ऑल्दो देयर विल बी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर सब्सिडियरी हेल्प फॉर सेल, ये कुछ केस आ जाए, बट देयर आर क्वेश्चंस इन किट। तो हो जाएगा, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है। Yes. टैकल क्या, उसको उसके ऑपरेशंस को इंक्लूड ही नहीं करना है, सिंगल लाइनर पीएनएल में दिखा देना, वैसे ही करना है जैसे हमने आईएफआरएस 5 में किया। ठीक है। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि क्या पता हमारा ईयर एंड है, हमारा ईयर एंड है 1 Jan to 31 December, बट जो हम एंटिटी को परचेज कर रहे हैं उसका ईयर एंड है 1 April to 31st, what is that, 31st March। ठीक है। तो क्या करेंगे उस केस में, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, हमारा पेरेंट कंपनी का ईयर एंड है 1 Jan to 31st December, सब्सिडियरी का ईयर एंड है 1 April। इसका मतलब जो ओवरलैपिंग पीरियड है दैट इज ऑफ 9 मंथ्स ओनली, फॉर फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, 3 महीने का जो बैलेंस होंगे, 3 महीने के बैलेंस वो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट ना। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इज सेइंग some companies in the group may have different accounting dates. In such practice, such companies will often prepare financial statement up to the group accounting date for consolidation process। ठीक है। For the purpose of consolidation, IFRS 10 states that where the reporting date for a parent is different from that of a subsidiary, case आ गया। The subsidiary should prepare, what subsidiary should prepare additional financial statement as of the same date as the financial statement of the parent। मतलब पेरेंट, उसको पेरेंट के ईयर एंड के हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब जाके हम कंसोलिडेट प्रोवाइड कर पाएंगे। ऑल्दो स्टैंड अलोन में वो अपना ईयर एंड फॉलो करे, बट फॉर कंसोलिडेशन प्रोसेस उसको सेम एज पेरेंट कंपनी के रिपोर्टिंग पीरियड का बैलेंस बेसिकली पूरा फाइनेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर स्मूथ कंसोलिडेशन प्रोसेस। ठीक है। अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डू सो, अगर इम्प्रैक्टिकल है तो नहीं नहीं देगी तो दैट इज फाइन। ठीक है। बट बहुत बहुत रेयर केस है, उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा मेजोरिटी ऑफ द केस। अगर इफ इट्स impractical to do so, IFRS allows use of subsidiaries financial statement made up to date more than 3 months earlier or later। इसका मतलब गैप, अगर दोनों के अकाउंटिंग डेट्स में गैप अगर 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स कम या तो ज्यादा, हमारे में अभी क्या सीन है, 3 मंथ ज्यादा है कि कम है, 3 मंथ्स ज्यादा है ना, हाँ। क्योंकि दिसंबर में पेरेंट का एंड हो जा रहा है रिपोर्टिंग डेट, हमारा रिपोर्टिंग पीरियड इज 1 April to 31st March। तो इट्स इट्स टॉलरेबल गैप की 3 मंथ्स अर्लियर या 3 मंथ्स लेटर, तो हमारा लेटर है नॉट अर्लियर। ठीक है। अगर मैं बोलूँ वाइस वर्सा, ये पेरेंट का है और ये उसका है सब्सिडियरी का, तो One. ये अर्लियर हो गया, तो दिस गैप इज एडजस्टेबल, हम एडजस्ट कर लेंगे इस गैप का, पर इससे ज्यादा रिपोर्टिंग डेट का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एग्जाम में यू वोंट फाइंड ऑल दिस सिचुएशन, बट ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मिनिमम
क्या कहते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मंथ का गैप कितना होना चाहिए, तो यू हैव टू टेक लेटर और अर्लियर 3 मंथ, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ। ठीक है, यू गेटिंग क्या हो रहा है फ्रॉम या प्रैक्टिकल या पॉइंट ऑफ व्यू। यस यस यस। वन मोर टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल नॉट कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, कि अगर उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ग्रुप कंपनी, पेरेंट कंपनी IS 16 को रिवैल्यूएशन मॉडल से यूज करती है, बट हम्म। सब्सिडियरीज कॉस्ट मॉडल से यूज कॉस्ट करती है, मॉडल। हाँ। तो उसको फिर ग्रुप का फॉलो करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सो इन शॉर्ट लाइक ऑल द चेंजेस ईयर का हो या कोई भी पॉलिसी का हो, पेरेंट के सब्सिडरी हिसाब से को ही करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। हाँ। करेक्ट करेक्ट। राइट। ठीक है, ओके। क्विक ब्रश अप क्वेश्चन, 1 2 आंसर। डी। आई वांट क्यूमुलेटेड आंसर, आई मीन ऑल फोर। अच्छा ओके। 1 minute। या आई थिंक आई एम डन। Then, what is the answer first one? फर्स्ट इज डी। Why D?
If you're saying D, then I think you didn't read the question properly. Like A, B is correct. B, C, mein I was confused. Why D? Because like having the ability to use its power over the investor. Parent का control है subsidiary पे, but not on the amount of their returns, right? No, we have read this right in definition. What is the definition? Investor control an investee when the investor is exposed or has right to variable return from the involvement with the investee has ability to affect those returns with power over investee. क्वेश्चन इज सेइंग कौन सी चीज इंक्लूड नहीं हो सकती है एज पर IFRS 10 from the definition of control. Having power, having power over investee, yes. Having exposure over right, yes. Having majority of the shares in the investee. I told you initially, it's not included in the IFRS 10 कि majority of the shares लेने जरूरी है. Even if you have 40% share, but the ownership is something is somewhat structured a way कि you have majority of the case. For example, company 100 out of 100%, 40% owned by you and 60% owned by anonymous people. They are Hmm. not interacted with each other. They are anonymous, unknown people. So कहीं ना कहीं there is high chances कि the decision they will take the taken decision taken by them that would not be the same as ours. और हमारा जो भी होगा वो 40% majority वाला होगा. Hmm. Correct ना? So still I'm getting the return even if I'm owning less number of shares. Correct. Or Right. D is explicitly saying having ability to use power over investee to affect the amount of investor return. That is fine. Yeah, it's 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 the definition of control as per IFRS 10. So the answer is C, which is not included in the control. There is no there is no uh, explicitly told or any included in the definition of control. कि you once you got the uh, control, sorry, once you have owned majority of the shares, you got the control. ठीक है. Right. हाँ, कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे बट इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली टोल्ड क्योंकि देयर इज अ रीजन. अगर इफ यू आर ओनिंग लेस नंबर ऑफ शेयर्स, more consider vice versa. If you are owning more number of shares, but the purchase agreement says that still even if you are owning more number of shares, but majority of the decision is taken by our board of directors only. तो Hmm. क्या होगा? फिर तो कंट्रोल नहीं हुआ ना. हम फिर भी 70% ओन करें बट डिसीजन जो भी लिया जाएगा दैट इज टेकन बाय 30% ऑफ द मैनेजमेंट. करेक्ट. Right. We didn't got the control even if we are owning majority of the number of shares. Yeah. वाइस वर्सा अगर 40 हो गया but contract is saying कि majority of the decision is taken by us, then we got the control even if we are owning less number of shares. Hmm. और एक और केस हो सकता है कि we owning 40% but बाकी जो 60% है कि 60% है those are anonymous people. करेक्ट. यू गेटिंग राइट क्या हो रहा है? Yeah. तो जरूरी नहीं कि उनका डिसीजन सेम ही जगह सबका 60% सेम ही जगह आएगा कि भाई 10% वी आर सेइंग 10% डिविडेंड पे करना है, दे ऑल आर सेइंग 20% ही पे करना है. तो अगर वो हो गया तो देर इज अ रिस्क, तो फिर हमारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा. बट अनोनिमस पीपल है तो डिसीजन सेम होना दैट इज लेस लाइकली. करेक्ट ना? आउट ऑफ अनोनिमस पीपल कुछ और भी कह सकते हैं, अच्छा 10% डिविडेंड इज ऑल्सो गुड. तो वी आर ऑल्सो गेटिंग द वोट्स राइट. Hmm. So the answer is C. It's not Understood. included in definition. What is the answer of second one? B. Why B? Because it says that you need the consent of shareholders. If we need the consent of shareholders, I think it doesn't mean that we have control over the subsidiary.
करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट वन इज सेइंग 55% ओन कर रहा है, तो 4 आउट ऑफ 7 तो हम ही अपॉइंट हाँ करें, तो कंट्रोल आ गया. हाँ. सी इज सेइंग कि हैविंग करंटली एक्साइटेबल ऑप्शन वुड टेक द शेयरहोल्डिंग ऑफ कंपनी टू 55%, तो कहीं ना कहीं वी हैव ऑप्शन टू एक्सरसाइज. हम्म. तो इज सेइंग कि हमें डी हमारे पास ओके. कंट्रोल हो सकता है. D is saying owning 40% but having majority of the voting rights within the company. C. हम्म. मैंने जो केस बोला सेम डिट्टो वही है. हम्म. So the answer is B. You're correct. Owning 51%, but the constitution requires the decision needs the unanimous consent of the shareholder. अगर हमें कंसेंट लेना है शेयर होल्डर्स का, तो फिर तो हमारा 50%, 51% ओन करने का मतलब ही नहीं बनता फिर. हम्म. What is the answer for C? Third one. Third is A. Which of the following is not a condition which is met? Okay. Why A? Because it says that subsidiary company की activities अलग है, Hmm. and we need to consolidate as per their activities, Hmm. which is wrong. We have to consolidate as per parent activities. Your answer is correct, but the rationale is not correct. ऐसा नहीं कि पेरेंट के एक्टिविटी के हिसाब से करना, नहीं. हाँ, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि अगर पेरेंट इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, Hmm. सब्सिडियरी इज इनटू Clothing. क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो पेरेंट कैनॉट से कि अगर मैं दोनों की इंडस्ट्री अलग अलग है तो हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे. दे स्टिल हैव टू कंसोलिडेट. ऐसा नहीं कि उसकी एक्टिविटी के हिसाब से कंसोलिडेट करना है. सी रीजन आप समझ रहे हो, वो क्या कह रहा है कि मेरी इंडस्ट्री, हम दोनों की इंडस्ट्री अलग अलग है इसलिए हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे, Hmm. वो ये कह रहा है. बट द रीजन इज रॉन्ग. एज पर स्टैंडर्ड दिस इज नॉट अलाउड. हमें इवन इफ आपकी एक्टिविटीज अलग अलग है बट यू आर ओनिंग, राइट, तो यू Right. हैव टू पुट देयर फाइनेंशियल इनटू वन एंड शो अ सिंगल एज अ होल. Okay. ठीक है. Hmm. The first one is saying that the activities of subsidiaries significantly different to the rest of the group, and to consolidate them would prejudice the overall group position. When question is asking not a condition which must be met, कौन सी condition नहीं है? The first one is not the condition. वो तो point ही irrelevant है, ये point आना ही नहीं चाहिए. Hmm. Correct. B is the condition क्योंकि ultimate parent company is providing the producing the statement, financial statement. C is the one who is saying कि उनके public stock listed नहीं है, तो private entity, that is the condition. D is also a condition क्योंकि we have to take consent of all our directors and management, basically the owners. Right. So first one is not the condition, and it's not a condition, and it's also a irrelevant point. Hmm. ठीक है. क्योंकि एक्चुअल में रियल लाइफ में यही होता है बेसिकली. इफ टुमारो एप्पल परचेज जियो, इट डजंट मीन कि एप्पल अब अपने फाइनेंशियल में जियो के ऑपरेशंस नहीं दिखाएगा, जियो के बैलेंसेस नहीं दिखाएगा. करेक्ट. उसको दिखाना पड़ेगा. एप्पल कैनॉट से कि अच्छा मैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हूँ, मेरा तो वेरेबल्स में जा रहा हूँ और मैं टेलीकम्युनिकेशन के बैलेंसेस इंक्लूड नहीं करूंगा. दैट इज रॉन्ग. दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट पॉइंट. You are owning the company, you have to put in the consolidated financial statement. Until and unless you have purchased the company with an intent to sell it, then it will come under IFRS 5. So wo फिर you have to show as a single line and statement of profit and loss, balance profit as per discontinued operation. Right. Understood? Crystal clear? Yeah. What is for fourth one? A. Why A? Because it is the only condition that is correct. Like it says that uh, statements can be acceptable if the year end between both the subsidiary and parent differs by 2 months. Hmm. It's not more than three, and the other three conditions B, C, D doesn't match. Okay. Yes, answer is correct. It's A1, and it's also acceptable because the difference is only 2 months. It's not more than 3 months. Hmm. ठीक है. B is saying for consolidation, all company must have a same year end. It's not the case. Correct. ये जरूरी नहीं है कि सेम ही ईयर एंड होगा सब कंपनीज का. इट्स नॉट Compulsory द नहीं है. कंपलसरी नहीं है, तो Hmm. दिस नॉट द रिलेवेंट पॉइंट.
Hmm. C is saying all companies within a group must have same accounting policy. और हमने अभी पढ़ा कि what if companies have different accounting policy. Hmm. Only 100% subsidiaries need to be consolidated. ये तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं. कंट्रोल आ गया मतलब वी हैव टू कंसोलिडेट. ऐसा जरूरी नहीं कि 100% ओन कर रहे हैं तभी हमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. Right. करेक्ट. द Yeah. आंसर इज ए. Hmm. जस्ट अ सेकंड. Yeah. हेलो. Yes. So we are done with chapter 17 of principles. Basically, all this we learned was principles, definition, exemptions, conditions, year end, different accounting policies. That's this all on we learned. Okay. Hmm. Now the next chapter is consolidated financial statement of financial position, which is the balance sheet part. Okay. So let's take a break of 10 minutes. We'll meet at 1:10. Okay. Okay.
हेलो। Hello. हेलो। Yeah. Let's start with chapter 18. This chapter is the heart of consolidation. Principles. The basic principle is what? हमें अब सबको मर्ज करना है, तो हम उसकी लायबिलिटी भी हमारी लायबिलिटी मानेंगे, उसके एसेट्स भी हमारे एसेट्स मानेंगे, उसकी प्रॉफिट भी हमारे प्रॉफिट्स मानेंगे। ठीक है। Hmm. व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग? सिंगल सब्सिडियरी है तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी सोन इन parent net parent statement of financial position is replaced by net asset of S. Cost of investment in S is effectively cancelled against ordinary share capital and reserves of subsidiary, leaving goodwill as balance. क्या हो रहा है? What is trying to say कि जब हमने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे, सिंगल सब्सिडियरी के और हमारे खुद के, तो हमने क्या किया होगा? हमने फॉर एग्जांपल हमने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है इन एस एंड वी गॉट द कंट्रोल, ठीक है। Hmm. हम हमारी इंडिविजुअल बुक में क्या दिखाएंगे? कंसोलिडेट तो प्रोवाइड करेंगे, दैट इज फाइन, बट हम स्टैंड अलोन भी तो प्रोवाइड करेंगे ना हमारे। ठीक है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टैंड अलोन में हम क्या शो करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एस। फॉर एग्जाम्पल मैं एम पी एंड योर एस, आई विल शो इन्वेस्टमेंट इन एस सो एंड सो अमाउंट इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट Okay. अभी तो फॉर इंडिविजुअली ये तो मेरा असेट है, मैं असेट से दिखाऊंगा। बट बैलेंस शीट जब मैं कंसोलिडेट करूंगा उसको, तब तो मैं मानूंगा कि मेरी एंटिटी है, सब कुछ मेरा है, तो मैं उस टाइम पे तो नहीं दिखा सकता ना कि इन्वेस्टमेंट इन, खुद का इन्वेस्टमेंट ही खुद में दिखा रहा हूँ। Hmm. मतलब अब जब मैं आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज इंडिविजुअल पर्सन, आई विल कंसिडर माई पॉकेट्स एज डिफरेंट, बट आई एम सेइंग इफ आई कंसिडर्ड माई इंटायर फैमिली इनकम देन एवरी पॉकेट इज माइन ना। तो मैं ऐसा नहीं दिखा सकता इन्वेस्ट पॉकेट वन में इतना है, पॉकेट टू में इतना है। करेक्ट, राइट। Right. खुद का इन्वेस्टमेंट खुद में नहीं दिखा सकता ना। Hmm. तो वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस जो है शो करूंगा इफेक्टिवली कैंसल्ड। कैसे कैंसिल कैसे होगा? जब मैं उसको ना कंसोलिडेशन में मैं प्रोवाइड शो ही नहीं करूंगा, उसके डिफरेंस में क्या आएगा? गुडविल आ जाएगा। करेक्ट, राइट। मेरा इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? अभी मैंने इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में शो कर रखा हुआ है, बट कंसोलिडेशन में तो ये मेरी एंटिटी है, तो मैं मेरी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कैसे दिखा सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन एस? बट मैं गुडविल तो दिखा सकता हूँ ना, क्योंकि वो मेरा परचेज गुडविल है। करेक्ट। Hmm. अब उसके प्रॉफिट भी मेरे प्रॉफिट्स हो जाएंगे। जो डिफरेंस है ना, वो गुडविल और नेट एसेट के बीच में डिवाइड होके नेट ऑफ हो जाएगा, वो ये कह रहा है। एक क्वेश्चन करेंगे फुल। हेलो। Yeah, you're audible. आई डोंट नो व्हाट हैपन, आई गॉट डिस्कनेक्ट। आई एम ऑडिबल, राइट? Yeah, yeah. सो वे वी वर, हाँ, आई वाज सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट इन my own entity will be netted off. How? I'll record goodwill for that, and the net asset will be replaced. How? Hmm. For example, I'm showing 100 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट जब कंसोलिडेटेड शो करूंगा, तब दिस विल बी नेट ऑफ, ये हट जाएगा, क्योंकि हटाना ही पड़ेगा कि मेरा ही पॉकेट है, मेरा ही पॉकेट में दो बार नहीं दिखा सकता। Hmm. ठीक है, मैं उसके ऑपरेशन ऑलरेडी एड ऑन कर ही रहा हूँ। व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग? गुडविल और एस कंपनी के प्रॉफिट्स भी तो शो करूंगा, बेसिकली नेट एसेट्स। करेक्ट।
तो ये जो हाँ 100 है वो रिप्लेस होके गुडविल और नेट एसेट के फॉर्म में शो करेगा, ठीक है? यू गेटिंग क्या कहना चाह रहा? या व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इन इंडिविजुअल पेरेंट कंपनी विल शो 100, हम्म। बट जब कंसोलिडेट करेंगे तब नेट ऑफ करके दिखाएंगे, लाइक वापस 100 का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएंगे। जो सब्सिडरी का इन्वेस्ट किया है वो गुडविल और नेट एसेट में शो करेंगे। करेक्ट। वो शो नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा क्योंकि हम गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, हम उसके प्रॉफिट्स हमारे उसमें इंक्लूड करेंगे, तो कहीं ना कहीं इट विल गेट नेट ऑफ, ऑटोमेटिकली इट विल गेट नेट ऑफ, कुछ शो करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके। ठीक है। हम्म। बाकी सब तो विल विल डू प्लस प्लस। और वन मोर थिंग, क्या शेयर शेयर कैपिटल मैं सब्सिडियरी का भी इंक्लूड करूंगा मेरे बुक्स में, आई मीन कंसोलिडेटेड में, कि सिर्फ पेरेंट का रहेगा सब्सिडी शेयर कैपिटल? क्योंकि एसेट भी प्लस कर रहा हूँ, लायबिलिटी भी प्लस कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी प्लस करूंगा, तो व्हाट डू यू थिंक, विल आई ऐड शेयर कैपिटल, बेसिकली द इशूड शेयर कैपिटल, क्या मैं सब्सिडियरी का भी इंक्लूड करूंगा? यस। वाई? अगर सभी कर रहे हैं तो फिर वो भी करेंगे, उसको क्यों अकेला छोड़ेंगे? नहीं, शेयर कैपिटल एज अ ग्रुप मतलब अब वो मेरी ही एंटिटी है, तो मेरी एंटिटी मतलब मेरे ही शेयर कैपिटल दिखेगा उसमें, उसमें हम सब्सिडियरी का नहीं दिखाएंगे, व्हाट दे आर सेइंग। डी फॉर दैट। शेयर कैपिटल ऑफ अ ग्रुप which always equals the share capital of P only. हम खुद का ही शो करेंगे शेयर कैपिटल, बिकॉज कंपनी हम खुद की मान रहे हैं ना, ये कंपनी हमारी, तो हम्म। शेयर कैपिटल हमारा ही दिखेगा ये, हम दूसरे कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं दिखाएंगे। बेसिकली द इशूड वन जो मेन शेयर कैपिटल है वो उसमें कभी चेंज नहीं आएगा। ओके। तो ये दो तीन चीज का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट जो हम बुक्स में शो कर रहे हैं हमारी कंपनी में, वो नेट ऑफ हो जाएगा विद गुडविल और नेट एसेट्स में, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट कंपनी का ही होगा उसमें। और रिटेन अर्निंग, profits earned by the group is that all P's historical profit plus subsidiaries post acquisition profit. You understood right? हमारा प्रॉफिट तो होगा ही रिटेन अर्निंग में, बट प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरीज भी हम हमारा शेयर का, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरीज 100, हमारा 75% हम कंट्रोल करते हैं, 75 विल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा, एंड हम्म। 25% विल बी एनसीआई। व्हाट इज एनसीआई? Ah, yeah, it was. You have heard this term, I know, in F3. Yeah, yeah. 1 second. Yeah, it's non-controlling interest, which is Yes, the part where parent does not control the subsidiary share. perfect, perfect. uh, can you come on page number 430 of book, illustration 1? Yeah. Yes. This is the simplest example to understand this terminologies and all. फर्स्ट स्टेटमेंट Hmm. दिया, इंडिविजुअल स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों का, हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल Hmm. पोजीशन बनाना है, बैलेंस बनानी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ पी एक्वायर 100% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस ऑन 31 दिसंबर 2000 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। ठीक है, Hmm. वो तो बुक्स में लिखा हुआ है, बट अगर हम ये अगर इन्फॉर्मेशन ना भी देखें, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही देखें, फिर भी हमें दिख रहा है कि पेरेंट की बुक में इन्वेस्टमेंट इन एस लिखा हुआ है, Hmm. तो इसका मतलब 50,000 में परचेज किया हुआ है, Hmm. कॉस्ट। Hmm. तो उससे भी पता लग रहा है बेसिकली Hmm. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करके भी। Right. तो सोल्यूशन, सोल्यूशन फर्स्ट, नॉन करंट एसेट प्लस प्लस 60 और 50, इन्वेस्टमेंट इन एस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। बट कंसोलिडेट में कैसे आएगा? आई जस्ट टोल्ड यू वो रिप्लेस हो जाएगा, इट वोंट कम। अब सी बेसिकली हम पी और एस को एक पॉकेट मान रहे हैं, तो हम दिखाएंगे कि पी पी में इतना इन्वेस्टमेंट है, खुद का ही पॉकेट है। इफ यू आर अ फैमिली, ठीक है,
and parent is earning X amount of money and children are earning X amount of money. But if I say कि total family income क्या है, चिल्ड्रन प्लस पेरेंट, बट पेरेंट तो हम्म, ये नहीं कहेगा कि आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन दिस एंड दिस, इट नहीं। गेटिंग राइट, सेम पॉकेट, सेम ही पॉकेट में ना चीज, क्यों हाँ। दिखाएंगे? हम्म। राइट। तो इन्वेस्टमेंट इन एस वुड कम, करंट असेट 40 40 प्लस प्लस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली प्लस प्लस करना है। शेयर कैपिटल व्हाट, 100 प्लस 1, 100 प्लस 40, राइट? हाँ। नहीं। 100, राइट? ओनली 100। यस। 40 नहीं ऐड करना है। रिटेन अर्निंग इज हाउ मच, 30 and 10? बोथ विल इंक्लूड। नो, बट जस्ट सी, विल इंक्लूड रिटेन अर्निंग प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ठीक है? ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2024, हमने परचेज कब किया? 31 दिसंबर 2024 को ही परचेज किया, इसका मतलब साल के आखिरी में परचेज किया। और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2024 तक का ही बनाना है। देयर इज नो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। करेक्ट, अगर X5 का होता तो ऐड करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, X5 का होता तो ऐड कर, क्योंकि अभी तक जितना भी है दैट इज प्री एक्विजिशन। वी नीड हाँ, पोस्ट। अब अभी का जो 10 का रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट दिख रहा है एज के बुक्स में, वो हम अभी कंट्रोल ही नहीं कर रहे। हम्म। अब हमने अब परचेज कर लिया, तो ये हम्म। हमारा 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 कौन सा पार्ट होगा? पोस्ट एक्विजिशन, आप खरीदने के बाद जितना भी वो अर्न करेगी। यू हम्म। अग्री, राइट? रिटेन अर्निंग अब राइट। 10 से जब नेक्स्ट 12 हो जाएगा, तो 2 विल बी आर पोस्ट एक्विजिशन, मतलब 10 तो हमारा प्री एक्विजिशन था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो हमारा कंट्रोल ही नहीं था उसके उसके ऊपर। हम्म। बट जब हम हम्म। परचेज कर लिया, टू, नाउ द रिटेन अर्निंग इज 12, so आउट ऑफ 12 10 इज प्री, 2 इज पोस्ट, 2 में से हमारा शेयर विल ऐड ऑन प्री रिटेन अर्निंग। अभी तो कोई ऐड ऑन है ही नहीं कुछ, तो 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 रहेगा, जितना हमारा हम्म। हमारा अभी तक पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आया ही नहीं है। राइट। और करंट लायबिलिटी 20 प्लस 40 60, क्योंकि अब वो तो हमारी लायबिलिटी है सब कुछ, हम्म। असेट्स भी हमारे हैं, तो हम वो हमारी बुक्स में दिखाएंगे। प्रॉफिट हम अभी तक क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि अब तक हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे। अब हम्म। कंट्रोल करेंगे प्रॉफिट्स फॉर अब फ्यूचर जो ईयर। होगा वो ऐड करेंगे। करेक्ट, लेट्स read the solution. The balance on investment in S at a cost in P will be replaced by underlying assets and liability which the investment represents. What I told you, goodwill और net asset. नेट एसेट का मतलब क्या होता है? असेट माइनस लाइबिलिटी, तो हमने असेट एंटिटी के प्लस किए, लाइबिलिटी माइनस किए, तो नेट एसेट आ गया। हम्म। गुडविल भी ऐड ऑन करूंगा, करेक्ट, राइट? या। तो उसमें आ जाएगा ना 50 का रिप्लेसमेंट। यस। एक चीज एक चीज एक्सक्लूड किया, बाकी सारी चीज उसकी इंक्लूड कर दी, तो क्या हो रहा है? व्हाट आई एम डूइंग। और एक और ऐड चीज, कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली हमने रिप्लेस किया इन्वेस्टमेंट इन एस, और बाकी सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को मैथ ऐड कर दिया, इसका मतलब नेट असेट में उसका कंपोनेंट आ गया होगा। हाँ। तो वही चीज है बेसिकली, तो हम उस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, हम लाइन आइटम नहीं दिखाएंगे उसमें, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी असेट्स और लाइबिलिटी प्लस कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन एस करके क्या हम शो करना चाह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन एस, एस किया इंडिविजुअल में, बट कंसोलिडेट में तो हम प्लस ही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया तभी तो प्लस कर रहे हैं ना। हम्म। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हाँ। सब्सिडरी इज इफेक्टिवली कैंसल्ड, हाउ कैंसल? against the ordinary share capital and reserves. If you see, ordinary share capital is 40, return earning is 10, basically 50. Or you know net asset is what? Asset minus liability. तो कहीं ना कहीं if you see 40 is the total asset, 90 is the total asset of S, 40 is the current liability. तो 90 minus 40 is what? 50. नेट असेट का हम्म। मतलब क्या होता है? असेट माइनस टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में दो चीज है, एक साइड असेट्स, इक्विटी इक्विटी लाइबिलिटी है, यहाँ पे असेट्स है, तो असेट्स माइनस सिर्फ लाइबिलिटी का पोर्शन, तो बचा क्या? नेट असेट, इक्विटी का पोर्शन। दैट इज द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन एस। करेक्ट, तो 90 का हम्म। प्लस किया, 40 का माइनस किया, तो 50 से तो बड़ा ही है ना असेट्स, और वही हमने हम्म। किया। हम्म। बट देयर इज
बट दिस वोंट ऑलवेज बी द केस कि हम जितना नेट असेट्स था उतने का ही हमने पे किया। बेसिकली गुडविल का कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है। और जितना नेट एसेट था उतना ही हमने पेमेंट किया। 40 का नेट एसेट था, 40 का शेयर कैपिटल, 10 का रिटेन अर्निंग, तो हमने 40 उसको खरीदने के लिए 50 पे किया। बट व्हाट इफ वी आर पेइंग 60? करेक्ट। तो 10 क्या है, गुडविल का पोर्शन हमने एक्स्ट्रा पे किया, दैट इज 10 विल बी गुडविल बिकॉज हम्म, ऑफ द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी, हाँ, हमने 10 एक्स्ट्रा पे किया। तो गुडविल आ गया। और नेट एसेट तो राइट। वैसे भी आएगा ही, हम नेट एसेट का तो 100% पे करेंगे ही करेंगे। तो वो एडजस्टमेंट तो घुसेगा ही उसके हम्म, अंदर। ये गेटिंग राइट क्या हो रहा है? या वन मोर एग्जांपल। लेट्स से इन द सेम क्वेश्चन हमने 50 की जगह 60 में पे किया, उसको परचेस किया होता। ठीक है। और हमको क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में कि नेट एसेट इज 50 ओनली, 40 प्लस 10। और नेट एसेट ऐसे भी देख लो, हम्म, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट कितना 40 90, टोटल लाइबिलिटी सिर्फ करंट वन, लाइबिलिटी है तो 40, तो 50 हो गया। तो 50 हम्म, का नेट एसेट, कंपनी की नेट एसेट 50 है, हमने उसको 60 पे किया। तो कहीं ना कहीं 10 इज ऑफ गुडविल। करेक्ट। then we are paying more for their company's करेक्ट करेक्ट। goodwill. तो हम अगर 60 का पे किया होता तो हमारी बुक्स में क्या आता, इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट ऑफ 50. 60। कॉस्ट मतलब क्या, कितना हमारा खर्चा लगा पे करने। तो 60 कॉस्ट लगा ना हमारा, 50 क्यों है? हाँ, तो इंडिविजुअली हमें 60 शो किया होता। हाँ, अब जब हम कंसोलिडेटेड बना रहे हैं, हम असेट माइनस लायबिलिटी सब प्लस कर रहे हैं, तो नेट असेट तो एडजस्ट हो जाएगा 40 और 50, मतलब बेसिकली नेट नेट असेट 50 का तो एडजस्टमेंट आ गया। 10 हम हम्म, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट क्या है, हम गुडविल असेट्स में दिखा देंगे। हम्म, तो समझ आया क्या हुआ? या समझ 50 आया। नेट असेट आ गया और 10 का हम्म, गुडविल भी आ गया, इसका मतलब 60 बुक्स में आ गया। हम्म, उतना ही अपन ने पे किया था। देर लगे। या तो हम कहाँ थे? हाँ, 50 वॉज आर नेट असेट, वो हम ऑलरेडी अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि हम असेट और लायबिलिटी प्लस करेंगे। तो 50 का इम्पैक्ट आ हम्म, जाएगा। 10 का इम्पैक्ट हम एसेट में और हम्म, दिखा देंगे, तो 60 हो गया। तो 60 का हम्म, इन्वेस्टमेंट हटाया, इफेक्टिवली एडजस्ट कैसे हो गया, असेट लायबिलिटी प्लस किया, गुडविल शो कर दिया। तो नेट ऑफ इफेक्टिवली कैसे हुआ, बिटवीन गुडविल एंड नेट असेट। समझ आया, क्रिस्टल क्लियर? राइट, यस, यस। और इससे प्रेजेंटेशन कितना स्मूथ हो रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई, अगर इफ यू डोंट ऐड और माइनस, सिंपली बुक्स में दिखा दो, तो कंसोलिडेशन का वर्थ ही नहीं रहेगा ना। अगर सिर्फ कॉस्ट ही दिखा रहे हो, तो इंडिविजुअली हम्म, ऑल्सो शोइंग द सेम इम्पैक्ट एज अ लाइन आइटम 50। बट कंसोलिडेशन में हमें सब कुछ टोटल पता लगेगा, कितनी असेट्स थी, कितनी लाइबिलिटीज थी, कितना पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व था, प्री एक्विजिशन कितना था, क्या था। राइट, करेक्ट ना? यू टेल मी अंडरस्टूड, व्हाट यू अंडरस्टूड, आई मीन यस। इम्पैक्ट, हम क्यों इन्वेस्टमेंट इन एस नहीं शो कर रहे हैं? सी एज एन इंडिविजुअल 60 तो अपन ने पे किया ही है, हम्म। उसको एज एन इन्वेस्टमेंट, बट व्हेन वी कंसोलिडेट इट तो डायरेक्टली 60 शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो 50 कर रहे? इज द क्योंकि वो एक एक्चुअल ही इन्वेस्ट। पॉकेट है। हम खुद के ही कंपनी में, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, हमारा ही डिपार्टमेंट है, हमारा ही डिपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हम उसमें दिखाएंगे। हमने क्या लर्न किया, हाँ, कभी भी हम गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं दिखाते बुक्स में? एज पर IAS 38 हम इंटरनली जनरेट, इंटरनली हमारा खुद का भी तो कंपनी है, हमारी तो ब्रांड वैल्यू है। बट हम हमारी ब्रांड वैल्यू गुडविल क्यों नहीं दिखाते बुक्स में? क्योंकि वो एक बायसनेस क्रिएट कर देता है कि हम हमारा गुडविल ज्यादा ही दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा असेट ओवरस्टेटेड ही होगा, दैट इज इम्प्लाइड। तो वो बायसनेस हमें शो ही नहीं करना, इसलिए हम कभी इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाते। करेक्ट राइट। राइट। हम परचेज हम्म, गुडविल बुक्स में शो करेंगे, तो जैसे इसमें परचेज गुडविल शो करेंगे, सेम लॉजिक कि हम 50 का खुद का इन्वेस्टमेंट खुद के बुक्स में शो नहीं करेंगे। अगर हम मान रहे हैं कि हम एक ही एंटिटी है इन कंसोलिडेशन, इंडिविजुअल में तो हम मान रहे हैं कि दैट इज लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटीज।
अलग अलग एंटिटी, इसलिए हम्म, हम इंडिविजुअली दिखा रहे हैं कि वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ सो एंड सो एक्स अमाउंट। बट कंसोलिडेशन में जब हम मान रहे हैं कि इफ दिस इज अ सिंगल ग्रुप, वी आर सिंगल फैमिली, तो हम सिंगल फैमिली सिंगल ग्रुप में हम क्या क्यों दिखाएंगे हमारा इन्वेस्टमेंट? एक ही तो पॉकेट है, राइट। मतलब आई मीन हम्म, क्या हुआ, हमने 60 का अमाउंट पे किया, किसके जेब में गया पैसा? एस के जेब में गया। तो पैसा एक जेब से दूसरे जेब में गया तो रहा तो 60 का 60 ना। हम्म, करेक्ट। इफ आई से कि आई एम पेइंग टू माय फादर, ठीक है, तो मेरे मेरे अकाउंट से 10 रुपए कट के माय फादर बैंक अकाउंट को क्रिएटेड बाय 10, तो फैमिली में क्या इम्पैक्ट आया? माइनस प्लस। तो क्या मतलब 10 का 10 ही रहा ना, कुछ नहीं। कुछ फर्क नहीं आया, हाँ। एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में गया है सिर्फ। देयर इज नो इम्पैक्ट, राइट? हम्म, तो हम्म, सेम एज कंसोलिडेशन में शो क्यों करना है? मैं ऐसा थोड़ी शो करूंगा इन्वेस्टमेंट इन सो एंड सो कंपनी और वो मेरी सब्सिडरी है, तो इट्स वी आर सेम ग्रुप, सिर्फ पॉकेट चेंज हो राइट। रहा है कि एक के एक हम्म, के एंटिटी से दूसरे एंटिटी में पैसा जा रहा है। बट इफ आई कंसिडरिंग कि वी आर एज अ वन एज अ होल, तो फिर हम क्यों अलग अलग करेंगे? एक ही राइट। इम्पैक्ट आया ना। अब वो इम्पैक्ट हम कैसे दिखा रहे हैं? हम कैश प्लस कर रहे हैं। करेक्ट। अब हम कैश भी क्यों प्लस कर रहे हैं? वाई अभी डूइंग कैश प्लस? हम ही मान रहे हैं कि अब वही हमारी चीज है सब कुछ। करेक्ट। असेट्स भी हमारे हैं, कैश भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, लायबिलिटी भी हमारी है। तो जो हम्म, कैश हमने पे किया 60 का, डोंट यू थिंक वो कैश हम प्लस कर ही देंगे वापस? क्योंकि वो हमारा ही कैश था टेक्निकली। हाँ। आई मीन एज अ ग्रुप यस। हम कंसीडर करें तो हम प्लस कर ही देंगे ना, क्योंकि उसका कैश अभी उसके बुक्स में कैश दिख रहा है, बट ग्रुप एज अ ग्रुप तो वो एक ग्रुप का ही कैश है ना। जो गेटिंग क्या हो रहा है हम्म, फ्रॉम अ ब्रॉड यस। ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू में कहना चाहता, आई डोंट वांट कि सिंपल बस ये डेफिनेशन एग्जांपल सॉल्व करके सोच लो कि अच्छा सिंपल प्लस प्लस होता है, बट टेक्निकली फ्रॉम अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू बुक्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एंटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है? एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही एंटिटी है, तो वो प्लस सेम एक ही बात है, एक जगह से कैश गया दूसरी जगह गया, तो हम वैसे भी सब असेट्स प्लस करके हमारा नेट असेट और गुडविल में इम्पैक्ट आ ही जा रहा है उसका। देर इज राइट। नथिंग मच टू वरी ऑन दिस इन्वेस्टमेंट पॉइंट। अब वो नहीं, अब वो लॉजिकली भी हम उसको नहीं शो करेंगे बिकॉज ये इट्स अ कंप्लीट इररिलेवेंट पॉइंट। हम खुद के फैमिली के खुद के ग्रुप का इन्वेस्टमेंट खुद के कंसोलिडेशन में नहीं दिखाएंगे, विच इज रॉन्ग। इट्स जस्ट अ डिफरेंट पॉकेट, बट एज अ होल इट्स अ वन पॉकेट। ठीक है। या। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस। यस। या। सो लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द प्रोफोर्मा ऑफ नेट असेट्स बेसिकली। आई डोंट वांट यू टू लर्न, बट ठीक है, अगर बुक में दिया है तो एक बार देख लेना। इसका लॉजिक बेसिकली कैसे होता है, आई टेल यू।
बेसिकली शेयर कैपिटल, एक्विजिशन रेट, ये नेट एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मेट है कि एक्विजिशन हम्म, डेट पे कितना था, क्या अमाउंट था, रिपोर्टिंग डेट पे कितना हो गया, तो एक्विजिशन और रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस आया, दैट इज आवर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। ठीक है, हम उस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को हमारे शेयर शेयर ऑफ होल्डिंग्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल ऐड इन आवर रिटेन अर्निंग्स एंड आवर प्रॉफिट्स, रेस्ट विल गो इन एनसीआई। क्लियर, ये लॉजिक है। राइट। बस वही, और कुछ नहीं। और नेट एसेट में यू नो व्हाट ऑल कम, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग में भी थोड़ा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो शेयर प्रीमियम भी आएगा। शेयर प्रीमियम क्या होता है? कितना प्रीमियम पे हमने शेयर इशू किया, कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला। अगर $1 का ही फेस वैल्यू था, वी इशूड शेयर ऑन 5, तो इसका मतलब 4 इज प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम विल गो इन शेयर हम्म। प्रीमियम। रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस विल आल्सो कम अंडर नेट एसेट, करेक्ट, क्योंकि हमारी अर्निंग ये रिटेन राइट। अर्निंग। तो दिस इज द नेट एसेट। ठीक है। गुडविल, how do we calculate goodwill? I mean, any idea what we were doing in F3? Technical idea, what is the technical definition? Anything which we are paying over and above of net assets of another entity, that is goodwill. ठीक है, हम्म। but this is हम्म। the formula. Parent holding investment at fair value, कितना इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? द इंटरेस्ट विच वी आर नॉट कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज कब आएगी? इफ यू आर नॉट ओनिंग 100%, अगर 100% ओन कर रहे हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनसीआई, हाँ। करेक्ट। अगर पेरेंट हम्म। हमारा होल्डिंग इज ऑफ 75%, दिस विल बी 25%। ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हम्म। करेक्ट। तो अब 100, इसका मतलब हमें 100% कंपनी की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे टोटल यस। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, हाउ मच वी आर पेइंग। नॉट हाउ मच वी आर पेइंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ 70% वी आर पेइंग। ठीक है, 70%, 75% का फॉर एग्जाम्पल वी आर पेइंग 120। नॉन हम्म। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू है 35, तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी हुई? 155। वन वन नॉट फिफ्टी कंपनी की फाइव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 120 पे किया होगा, हमने गुडविल का भी पे किया होगा। इट्स नॉट अ कंपनी वैल्यू, पर हमने कंपनी का 75% खरीदने के लिए हमने 120 पे किया। अब हम नेट एसेट देखेंगे, कंपनी का नेट एसेट कितना था एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल इट सेज ओनली 120 वाज द नेट एसेट्स। ठीक है, तो गुडविल कितना आया? 155 टोटल, माइनस टोटल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, क्योंकि ये भी 100% ही होगा ना, और ये भी 100% है। ठीक है, 100% ऑफ द कंपनी हमने देख लिया कितनी है। हाँ, उसमें से हम कितना पे करें, एनसीए की कितना फेयर वैल्यू है, 100% ऑफ द नेट एसेट कितना है कंपनी का उस डेट तक, माइनस कितना, मतलब 35 विच वी पेड ओवर एंड अबव। इसका मतलब 35 आर वन गुडविल। क्वेश्चन। 155 is the 100% value of the subsidiary company, हम्म and we are paying 120, right? हम्म। So we have to pay 35 extra for that goodwill. नहीं नहीं, वी पेड 35 एक्स्ट्रा। हाँ, वही बोल रहे हो ना, गुडविल का 35 हमें एक्स्ट्रा पे करना है। हाँ करेक्ट, पे करना नहीं है, पे ऑलरेडी हो चुका है। ये व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल कंसिडरेशन, पीसी, परचेस कंसिडरेशन। व्हाट इज 155 परचेस कंसिडरेशन, नेट एसेट कितना है? इसका मतलब हमने नेट 120 का परचेस करने के लिए,
यू गॉट द पॉइंट क्या हो रहा है? परचेज कंसिडरेशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम्म 155 वाज द कंपनी, बेसिकली हमने 120 पे किया 75% ओन करने के लिए। 25% की वैल्यू कितनी थी? 35। करेक्ट राइट? वो क्वेश्चन में दिया होगा कि एनसीआई की कितनी वैल्यू है। परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ टोटल? 155। मतलब 155। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का मतलब क्या है? नॉन, अगर एनसीआई भी अगर खरीदना चाहे तो आज आज की डेट में कितना, कितने का, आई मीन एनसीआई अगर बेचना चाहे अपना शेयर, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वो आज की तारीख में कितने में बेचेगी, ये इसका मतलब है। तो 35 में बेचेगी। और नेट एसेट इज ऑफ हाउ मच? 120। तो 35 विच वी पेड, दैट इज गुडविल। ठीक है। राइट। अब लेस गुडविल, गुडविल अमोर्टाइज होता है कि इम्पेयर होता है? इम्पेयर होता है। वाई अमोर्टाइज नहीं amortization is होता? on tangible asset। अमोर्टाइज ऑन tangible इंटेंज, asset में होता है ना आपका। नहीं, अमोर्टाइज इज ऑन, अमोर्टाइजेशन इज ऑन इंटेंजिबल असेट्स। अमोर्टाइजेशन, गुडविल पे अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि गुडविल की यूजफुल लाइफ नहीं होती है। गुडविल इज व्हाट? ब्रांड वैल्यू, ब्रांड, व्हाट, हाउ कैन यू से कि ब्रांड वैल्यू की लाइफ 5 इयर्स है, 10 इयर्स है? तो देयर इज नो यूजफुल लाइफ। तो अगर यूजफुल लाइफ नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ अमोर्टाइजेशन। क्योंकि अमोर्टाइज क्या कर रहे हैं हम? सिस्टमैटिकली उस कॉस्ट को रिलीज कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर, बेस्ड अपॉन आर यूजेस। राइट। करेक्ट? सही है ना? इसलिए हम गुडविल को इंपेयर करते हैं कि गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू कम होगी तो किस वे में होगी? अगर उसकी वैल्यू ही गिर जाए, रेपुटेशन डाउन हो जाए कंपनी की ब्रांड वैल्यू की, तभी जाके गुडविल में इंपैक्ट आ सकता है, वरना नहीं आ सकता गुडविल में इंपैक्ट। राइट। करेक्ट? तो फिर या। इंपेयरमेंट, फॉर एग्जाम्पल 10 का हुआ पूरे साल में, तो रिपोर्टिंग डेट पे, अरे आरपीडी रिपोर्टिंग डेट पे क्या वैल्यू है? 25। ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, कि परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई का शेयर, लेस नेट एसेट ऑफ द कंपनी, difference is our goodwill, and less would be impairment if any, and total would be the uh, reporting date. ठीक है। रिपोर्टिंग डेट पे क्या बैलेंस? राइट। हाउ डू वी कैलकुलेट एनसीआई का पोर्शन? लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोफोर्मा। एनसीआई इज व्हाट? एनसीआई हमारे बुक्स में कहाँ पे शो होता है? नो आइडिया। असेट्स, लेट्स से कि अभी तक पीपी था हमारे बुक्स में, कोई टोटल करंट असेट कुछ नहीं है, टोटल असेट कितना हुआ? 100। ठीक है। इक्विटी में 50, रिटेन अर्निंग कितना था? 40। और एनसीआई कितना जाएगा? देयर इज नो लायबिलिटी इन आवर कंपनी, एनसीआई विल बी 10। एनसीआई कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। राइट। ठीक है। how liability is the liability of parent company। या देयर इज नो नॉन, इट इज नॉन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इट्स, इट विल कम ऑन द इक्विटी पार्ट, बिलो रिटेन अर्निंग। लायबिलिटी मतलब मींस अबव लायबिलिटी, liability। इट्स इक्विटी पार्ट, ओके। इट्स बिलो रिटेन अर्निंग। या। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं बिलो रिटेन अर्निंग शो कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? इक्विटी मेरा है, खुद की कंपनी का, रिटेन अर्निंग मैंने मेरा खुद पेरेंट कंपनी प्लस सब्सिडियरी आया होगा प्लस करके हम्म अपने शेयर के हिसाब से, प्लस मैं एनसीआई भी कर दूंगा,
इसका मतलब ये फॉर एग्जाम्पल 75/25 है, तो 75% यहाँ पे कैलकुलेट हो गया होगा, 25 मेरा एनसीआई आ जाएगा, इसका मतलब इक्विटी में मेरा कितना हो जाएगा? 100. 100%। सो आ गया, मतलब इसका मतलब मैंने पूरा अकाउंट में ले लिया मेरी सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी कंपनी में। Yeah. ठीक है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट रिटेन अर्निंग देन? एनसीआई इज व्हाट? एनसीआई भी क्या होगा कि जब खरीदा क्या वैल्यू थी एनसीआई की, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से एनसीआई का शेयर कितना है वो आएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर मेरा गुडविल जब मैंने कैलकुलेट किया तब वो फेयर वैल्यू बेसिस पे था कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे था? आई मीन जब एनसीआई मैंने कैलकुलेट किया गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पे, जो अभी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, या गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पे, तो Hmm. गुडविल, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस वन इज, दिस इज व्हाट, अगर गुडविल गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे और एनसीआई शेयर वाज हाउ मच, फेयर वैल्यू बेसिस पे, हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू मेथड पे यूज किया कि आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, Hmm. तो कैसे आई होगी? फेयर वैल्यू ऑफ एसीआई, एनसीआई होल्डिंग एंड एक्विजिशन, कैसे नंबर ऑफ शेयर्स एनसीआई ओन, फॉर एग्जांपल कंपनी की टोटल, कंपनी के पास शेयर थे 100, 75 वी आर ओनिंग, इसका मतलब 70 आउट ऑफ 100 75 शेयर्स आर ओन्ड बाय अस, 25 एनसीआई, तो 25 आर द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आज उस सब्सिडियरी की शेयर की वैल्यू क्या है। ठीक है, दैट इज द फेयर वैल्यू। बट अगर Right. प्रोपोर्शनल बेसिस, फॉर एग्जांपल उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया? नेट एसेट कितना है, नेट एसेट फॉर एग्जांपल 100 है और 100 का 25% कितना है, तो 25 आ गया। मतलब प्रोपोर्शन, मतलब एनसीआई नेट एसेट का मैं मल्टी प्रोपोर्शनेट डेटा कर रहा हूँ। Hmm. ठीक है, जरूरी नहीं है कि 25, जो 25% है वो मार्केट वैल्यू भी सेम ही हो। करेक्ट? यू Right. गेटिंग क्या हो रहा है? शेयर की वैल्यू प्रोपोर्शन बेसिस पे करूंगा मैं, तो मार्केट वैल्यू अकाउंट में नहीं आएगा। इस कंपनी के नेट एसेट कितने हैं उसका मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 25% कितना है इसका। करेक्ट? तो इफ गुडविल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा फेयर वैल्यू मेथड पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा गुडविल जो आएगा वो दो चीज में आएगा। फुल गुडविल, मेरा गुडविल का पोर्शन मेरा खुद का भी आएगा प्लस एनसीआई का भी गुडविल का पोर्शन आएगा, क्योंकि गुडविल फेयर वैल्यू मेथड, एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे यूज हुआ है। नहीं समझ आया? नहीं. एनसीआई मेजर्ड ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, इसका मतलब एनसीआई की वैल्यू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिराइव हुई है। हमने परचेस कंसिडरेशन पे किया एज पर मार्केट वैल्यू, उसकी क्या थी, हाँ. फेयर वैल्यू हाँ. बेसिस पे। तो ये जो गुडविल होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ फुल गुडविल। फुल गुडविल मतलब इसके अंदर 35 का, 35 में से कुछ शेयर एनसीआई का भी होगा उसके अंदर। Right. अगर मेरा प्रोपोर्शन बेसिस है, प्रोपोर्शन बेसिस मतलब क्या, मेरा नेट एसेट फॉर एग्जाम्पल 120 आ रहा है, उसका मैंने 25% स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि भाई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर 25%, तो 30। बट अगर मैंने इसका मार्केट वैल्यू देख रहा हूँ तो इट कैन बी 50 एज वेल, तो कहीं ना कहीं 20 का पोर्शन इज समवेयर बिटवीन गुडविल। Hmm. क्योंकि क्या हो रहा है, अगर फॉर्मूला के बेसिस पे भी जाते हैं, सेम यही एग्जांपल, अगर मेरा 120, 120 इज माय नेट एसेट, उस अगर मेरा, इफ आई इफ क्वेश्चन सेज कि एनसीआई इज कैलकुलेटेड एज पर प्रोपोज्ड प्रो रेटा बेसिस, तो इसका मतलब है कि 120 इंटू 30%, 25% कर दूंगा मैं सीधा, नेट एसेट का 25%, दैट इज नॉन हाँ. कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ अनदर हाँ. कंपनी। तो फिर हाँ. 30 आ गया। बट अगर क्वेश्चन ऑल्सो सेज कि, क्वेश्चन ऑल्सो नहीं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फुल, फुल आई मीन फेयर वैल्यू बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो 30, क्या पता 30 का वैल्यू मार्केट में 50 हो, फेयर वैल्यू मार्केट में। जो Hmm. 20 है वो क्या है, गुडविल। कैसे?
अगर मैं कैलकुलेट करूं 50 के बेसिस पे, 50 का मतलब फेयर वैल्यू, माय एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो इसका मतलब डोंट यू थिंक कि यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मैं 50 लूंगा, तो मेरा गुडविल कितना आ गया, 50 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शन बेसिस पे अगर मैं 30 लूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, मेरा गुडविल 150 आ रहा हम्म। है। गुडविल इज कमिंग 30, पहले आ रहा था 50, अब आ रहा है 30। तो डिफरेंस कहाँ जा रहा है, ये गुडविल का ही पोर्शन है। तो इसका मतलब अगर एनसीआई इज मेजर्ड ऑन फेयर वैल्यू, बेसिकली ऑन 50, अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे, माई हम्म। गुडविल इज कमिंग 50, तो इसका मतलब इसमें से एनसीआई का शेयर भी है और मेरा शेयर भी है। राइट। ठीक है, क्योंकि तभी गुडविल ज्यादा ही है, यू गेटिंग क्या हो रहा है। हाँ। अगर मैं 30 करूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इट इज 30, 25% की वैल्यू प्रोपोर्शन बेसिस पे, तो मेरा गुडविल कितना आ रहा है 30, बट पहले कितना आ रहा था 50, तो 20 का पोर्शन क्या है, दैट इज माई नेट एसेट, सॉरी, गुडविल का पोर्शन है एनसीआई का। करेक्ट। तो अगर दिस इज द केस, तो डोंट यू थिंक कि जब अगर मैं फेयर वैल्यू मेथड पे एनसीआई कैलकुलेट करूंगा, तो मेरा गुडविल का जो इम्पेयरमेंट आएगा, वो पूरा का पूरा मेरा खुद का नहीं होगा, पेरेंट का, क्योंकि वो गुडविल जो है वो ऑलरेडी एनसीआई और पेरेंट कंपनी में बाइफर्केटेड है, मतलब दोनों की गुडविल है ना, मेरी अकेले की गुडविल नहीं है। हम्म। करेक्ट, तो जो इम्पेयरमेंट आएगा वो दोनों का आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इम्पेयरमेंट आया इस क्वेश्चन में, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरा 50 था यहाँ पे फेयर वैल्यू, गुडविल इज कमिंग 50, 50 एंड इम्पेयरमेंट इज कमिंग 10, तो 10 में से 25 वुड बी एनसीआई का शेयर, एनसीआई भी तो बेयर करेगा ना गुडविल में। 10 में से पूरा का पूरा मैं मेरे रिटर्न अर्निंग में क्यों दिखाऊंगा पूरा लॉस। हाँ। हम्म। इसमें से आई एम टेलिंग कि अगर ये इम्पेयरमेंट जो आया गुडविल पे आया, और गुडविल इज फुल गुडविल, और फुल गुडविल कैसे है, क्योंकि एनसीआई इज मेजर्ड ऑन फेयर वैल्यू, तभी गुडविल ज्यादा ही है। तो इसका मतलब एनसीआई का भी पोर्शन इस गुडविल में, तो जो गुडविल में इम्पेयरमेंट आया हुआ है, पूरा का पूरा मैं लॉस क्यों खाऊंगा, एनसीआई भी तो अपने शेयर का लॉस खाएगा, दे विल हम्म। बेयर देयर ओन लॉस। तो 10 into 25%, तो 2.5 will be bared by NCI and 7.5 will be bared by us। तो 7.5 का लॉस हमारे बुक्स में मतलब रिटेन अर्निंग में दिखेगा, पेरेंट कंपनी रिटेन अर्निंग में दिखेगा, बट 2.5 किस में दिखेगा, एनसीआई में दिखेगा। यहाँ पे सी, एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन क्या थी, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 10 का 50 हो गया, रिजर्व, इसका मतलब 50 इज अर्न बाई, सॉरी 40 पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, 10 का 50 हो गया। तो 40 में से पूरा का पूरा मेरा तो नहीं है पोर्शन कंसोलिडेशन में, 25% एनसीआई का भी है, दैट इज द पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व फॉर एनसीआई ऑफ 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, सेम रिटेन अर्निंग में भी 40 का 75% मेरा जाएगा, मेरा खुद का शेयर है, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट ही है ना 75%। हाँ। तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, फिर एनसीआई में अब अगर कुछ इम्पेयरमेंट हुआ है, तो एनसीआई में 2.5 का लॉस जाएगा, और बाकी का 7.5 का लॉस किस में जाएगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग मतलब सिर्फ हमारे शेयर का ग्रुप का रिटेन अर्निंग, और एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वी आर नॉट कंट्रोलिंग इट। सही है ना, हम उसका लॉस उसके बुक्स में दिखा रहे हैं, उसका प्रॉफिट उसके बुक्स में दिखा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हमारे बुक्स में दिखा, हमारे ग्रुप रिटेन अर्निंग में दिखा रहे हैं, हमारा लॉस हम हमारे बुक्स रिटेन अर्निंग में दिखा रहे हैं। हम्म। अगर मैं ग्रुप रिटेन अर्निंग में शो करूँ 10 का 10 पूरा लॉस, डोंट यू थिंक मेरा, अगर ये मेरा खर्चा ही नहीं है, तो मैं मेरे रिटेन अर्निंग में क्यों दिखाऊं। 10 में से राइट। ढाई इज ओन बाई रिटेन अर्निंग, सॉरी, एनसीआई, एंड 7.5 इज माई एक्सपेंस। तो डोंट यू थिंक 7.5 मेरे रिटेन अर्निंग में आएगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग, एंड एनसीआई बेयर करेगी 2.5 का, तो उसका शेयर में माइनस करूँ। करेक्ट ना। राइट। राइट। तभी इसमें लिखा हुआ है कि एनसीआई शेयर ऑफ इंक्रीमेंट कब, जब फेयर वैल्यू मेथड यूज किया होगा, तब भी। और हमने डिफरेंस देखा यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम पे, कि अगर फेयर वैल्यू मेथड पे यूज कर रहे हो तो गुडविल इज इंक्रीजिंग, एंड इफ वी आर यूजिंग नेट प्रोपोर्शन डेटा, प्रोपोर्शन बेसिस मेथड, देन गुडविल इज reduced। अगर नेट एसेट बेसिस पे है तो गुडविल पूरा का पूरा हमारा ही है फिर। करेक्ट।
तो जितना का खर्चा आएगा 10, फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट ऑफ $10 हैज बीन incurred in current year, तो पूरा का पूरा विल गो इन आवर ग्रुप इट, so there is no cost of NCI come under proportion based method. Say yes or no if you understood. काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है ये. Why confusing? सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है. अगर मैं 50 का मेरा प्रपोज फेयर वैल्यू आ रहा है, एनसीआई इज मेजर्ड ऑन फेयर वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख के कैलकुलेट किया. परचेज कंसिडरेशन इज 170, नेट एसेट इज हाउ मच, 120, तो मेरा 50 का गुडविल आ रहा है. बट अगर मैं प्रोपोर्शनल डेटा पे यूज करता हूँ, आई एम सेइंग माई वैल्यू ऑफ 120 विच इज अ नेट एसेट 25%, तो 30 आ रहा है. तो 30 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ही कंपनी की वैल्यू फेयर वैल्यू पे पे कर रहा हूँ ना. मतलब जो हाँ. 120 है वही मैं फेयर वैल्यू पे पे कर रहा हूँ, बाकी तो नेट एसेट जो एनसीआई का पोर्शन है वो तो कंपनी के नेट एसेट के बेसिस पे ही है. तो देर इज नो ओवर एंड अबव पेमेंट. थोड़ा सा डीप थिंक करो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस इसमें इफ आई से कि 50 है, ठीक है, इसका मतलब इन 120 वी आर ऑल्सो पेइंग ओवर एंड अबव ऑफ कंपनी नेट नेट एसेट, तभी हम गुडविल आएगा. हम्म. ठीक है. अब फेयर वैल्यू पे कैलकुलेटेड है एनसीआई, इसका मतलब एनसीआई ऑल्सो बीन टेकन ओवर एंड अबव. एनसीआई भी पे कर रहा है गुडविल के लिए. हाँ. करेक्ट, वो भी फेयर वैल्यू पे कर रहा है वो. तो इसका मतलब नेट एसेट तो ऑब्वियसली कम होगा फेयर वैल्यू से. करेक्ट, राइट. हाँ. तो इसका मतलब एनसीआई भी ओवर एंड अबव पे कर रहा है. हम्म. क्या हो रहा है? हम गुडविल मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव ऑफ नेट एसेट. हाँ, दैट आई अंडरस्टूड. ठीक है ना. तो अगर मैं 30 लिख दूं यहाँ पे, मतलब प्रोपोर्शन बेसिस पे यूज किया हुआ है. प्रोपोर्शनेट मेथड मतलब क्या? जो नेट एसेट आ रहा है बुक्स का, उसका ही स्टेट फॉरवर्ड 25%, मतलब उसका रेशियो, उसका शेयर. तो हम्म. देर इज नो फेयर वैल्यू, देर इज नो ओवर एंड अबव पेमेंट, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, उसकी गुडविल की वैल्यू हम पे ही नहीं कर रहे, क्योंकि सिंपली हम नेट एसेट का मल्टीप्लाई कर दिया. इसका हाँ. मतलब इसके अंदर सिर्फ 120 का पोर्शन है जो हम ओवर एंड अबव पे कर रहे हैं हमारे शेयर का 75% का. क्लियर? व्हाट आई हम्म. एम ट्राइंग टू से, हम हमारे मैं मेरे 75% का 120 पे कर रहा हूँ. इसका मतलब मेरे 120 में कहीं ना कहीं पेइंग ओवर एंड अबव ऑफ 75% ऑफ नेट एसेट. हम्म. यू गेटिंग क्या क्या कह रहा हूं मैं? यस. तो इसलिए जब मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यूज करूंगा तो मेरा जो गुडविल आएगा दैट वुड बी पार्शियल गुडविल, और मेरे खुद का ओनर्स गुडविल होगा वो. हम्म. बट अगर मैं एनसीआई का एनसीआई गुडविल नहीं फोर होगा. फेयर वैल्यू पे यूज करूंगा 50, तो मेरा गुडविल 50 आ रहा है. इसका मतलब एनसीआई आल्सो पेइंग ओवर एंड अबव नेट एसेट, तो द गुडविल ऑफ 50 इंक्लूड शेयर ऑफ एनसीआई एज वेल. तो अगर इम्पेयरमेंट आ रहा है गुडविल का, तो दोनों में बटेगा, डिपेंडिंग बेस्ड अपॉन देयर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स. राइट. ठीक है. अंडरस्टूड. या. बस वही है इसमें. इसलिए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कैलकुलेशन आ रहा है कि इम्पेयरमेंट इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि जब फेयर वैल्यू मेथड पे कैलकुलेट किया तो गुडविल एनसीआई का भी पोर्शन है, इसलिए वो हम्म. भी बेयर करेगा. हम्म. अब ग्रुप रिटेन में 75, फिर उसका 75% चला जाएगा, उसका पोर्शन. बट अगर प्रोपोर्शन बेसिस पे यूज किया हुआ तो पूरा का पूरा गुडविल इज ऑफ माइन ओनली, क्योंकि मैं ही ओवर एंड ओवर पे कर रहा हूँ, एनसीआई नहीं पे कर रही. यस. एनसीआई क्या कर रही है? एनसीआई सिर्फ क्या 120 टू 25% नेट एसेट का कर रही है. देयर इज नो ओवर एंड अबव पेमेंट. हम्म. वो मार्केट वैल्यू को कंसीडर ही नहीं कर रही है. अगर मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करी तो गुडविल आएगा कैसे? नहीं आएगा. हम्म. करेक्ट. राइट. So this is the concept of full goodwill and partial goodwill. Full goodwill mean NCI is measured on fair value. Partial goodwill मतलब NCI is measured on proportionate प्रपोर्शनल. basis. Proportionate of what? Net asset. या. ठीक है. What will be the journal entry if I ask about the journal entry of both the method? Method one
मेथड, तो मेथड वन इज ऑफ फेयर वैल्यू एंड एंड प्रोपोर्शनेट। ठीक है। हम्म। एंट्री क्या बनेगी? इन फेयर वैल्यू सेम एग्जांपल, मेरा गुडविल का इम्पेयरमेंट आया 10, तो मतलब गुडविल विल बी रिड्यूस बाय 10, एंड गुडविल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट, या तो प्रोपोर्शन डेबिट टू का मेरा दैट, लॉस जाएगा लॉस टू गुडविल। ग्रुप आर ई। डेबिट वुड बी व्हाट? एनसीआई, एंड क्रेडिट वुड बी व्हाट? गुडविल। क्या डिफरेंस? 7.5 हम बेयर करेंगे, 2.5 एनसीआई बेयर करेगा, और हम टेक्निकली गुडविल से टोटल कितना रिड्यूस होगा? 10। करेक्ट। या सेकेंड सिनारियो, सेकेंड सिनारियो में यू टेल मी क्या आएगा अगर गुडविल हमारा ही है, तो क्या एंट्री है? टू प्रिटेंड अर्निंग टू गुडविल, नो एनसीए। परफेक्ट। डन। डन। बस यही करना है, और ये रही एंट्रीज। डेबिट ग्रुप रिजर्व्स, अगर प्रोपोर्शन बेस पे डेबिट ग्रुप गुड, डेबिट ग्रुप रिजर्व, क्रेडिट गुडविल, फेयर वैल्यू पे है डेबिट ग्रुप रिजर्व, डेबिट एनसीआई का पोर्शन एंड क्रेडिट गुडविल। ठीक है। impairment of goodwill, if goodwill is considered to be impaired during the post acquisition reserve must be reflected in financial statement, वो हम कर रहे हैं according to goodwill deferred to the accounting policy reflecting the ownership of the goodwill। ठीक है। राइट। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट डिफर्स, कैसे डिफर्स? अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी फॉलोड टू वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे किया तो गुडविल कैलकुलेशन अलग जाएगा। वी नो क्या डिफरेंस आया, 50 का 30 हो गया। करेक्ट। तो डिपेंडिंग valuation calculation of impairment would be different if the method of valuing NCI is different। ठीक है। क्योंकि वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ओनरशिप ऑफ गुडविल। अगर फेयर वैल्यू पे है तो गुड एनसीआई का भी ओनरशिप आएगा गुडविल में। अगर प्रोपोर्शन बेसिस पे है, नेट एसेट ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट आएगा, तो द ओनरशिप इज ऑफ ओनली हुम? पेरेंट कंपनी। हाँ, प्रपोर्शनल बेसिस पे। ठीक है। बस वही लिखा हुआ। नेगेटिव गुडविल, कैन गुडविल बी कम इन नेगेटिव? इन व्हाट इंस्टेंसेस? कैसे हो सकता है? मतलब 120 का नेट एसेट है, हमने 110 पे ही खरीद लिया, तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। हम्म। करेक्ट। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत जरूरी थोड़ी हमेशा हर जो कंपनी होगी उसका गुडविल ही होगा, उसकी ब्रांड वैल्यू होगी। क्या पता कोई एकदम खराब परफॉर्मेंस कंपनी है एंड पेरेंट कंपनी थिंक्स कि अगर इसमें खरीद लिया और मैंने इन फ्यूचर इसको ग्रो किया फ्रॉम लॉस परफॉर्मिंग, तो इसकी वैल्यू और बढ़ सकती है, तो इस अभी इसको सस्ते में खरीद लेता हूँ ताकि इसकी वैल्यू जब और बढ़ेगी आई सेल इट अप। ऐसा भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो नेगेटिव गुडविल कब हो सकता है? जब बेसिकली कंपनी की वैल्यू ही बहुत डाउन हो, तब कैलकुलेट हो सकता है। बट बहुत, ये चीज बहुत कम, बहुत रेयर है कि गुडविल भी कम, गुडविल भी नेगेटिव। कब आएगा? अराइज कब होगा नेगेटिव गुडविल? वेयर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? परचेस कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट कितना आया, और वो परचेस कंसिडरेशन होता है। हम्म। तो नेट एसेट अगर 100 है एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90, इसका मतलब क्या होगा? 100 की चीज 90 में परचेज कर ली। राइट। IFRS 3 does not refer to negative goodwill, although this is commonly used। इसका मतलब बार्गेन परचेज हो गया, सस्ते में ले लिया, बार्गेन परचेज, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। Most likely reason for negative goodwill is a misstatement of fair value of asset liability. The standard therefore requires the goodwill calculator to be reviewed to ensure the correct fair value to be included। ये क्या कह रहा है स्टैंडर्ड की? नेगेटिव गुडविल आने का चांस बहुत कम है, तो अगर इन एग्जाम अगर आपका गुडविल नेगेटिव में आ रहा है तो मेक श्योर करो कि आपका जो कैलकुलेशन है गुडविल का वो अच्छे से हो, बिकॉज देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका गुडविल नेगेटिव में आएगा। हमेशा गुडविल पॉजिटिव में ही आएगा। मतलब चांसेस। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, हाँ नेगेटिव आ सकता है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड एक बार और कैलकुलेट कर लो, रिव्यू कर लो अपना गुडविल कैलकुलेशन, टू मेक श्योर कि कैलकुलेशन सही है।
That's what the standard is saying. Negative goodwill may also be arise for commercial reason. For example, subsidiaries has poor reputation or a history of trading problems. Correct? That's what I told you. Right. Hmm. After review of fair value, any negative goodwill remaining is credited directly to statement of profit and loss or retained earning if we are only considering statement of financial position. अगर मैंने गुडविल को परचेस कर लिया सस्ते में ऑन बार्गेन परचेस यूजिंग टेक्निकल टर्म, इसका मतलब दैट इज माय गेन. सिंपली स्टैंडर्ड सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एज डिस्काउंट परचेज और बार्गेन परचेज, कोई भी टर्म यूज कर लो. गुडविल. ठीक है. अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन ही कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा एडजस्टमेंट जाएगा रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऑफ द ईयर का कंपोनेंट होगा. करेक्ट. Hmm. बस वही चीज है कि अगर बैलेंस शीट कंसिडर करें तो एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग में जाएगा. पीएनएल कंसिडर कर रहे हैं तो पीएनएल में तो पता ही है कहाँ जाएगा गेन, इनकम शीट इनकम. ठीक है. ओके. लेट्स टेक अ लंच ब्रेक. इट्स 14:08. विल मीट बाय 14:40. Okay. ठीक है. बाय.
Hello. Yes. Let's continue. What is non-controlling interest? In some cases, parent may not own all of the shares in a subsidiary. Example, if he owns controlling 80% interest in the ordinary share capital of S, there is a non-controlling interest of 20%, which means that 20% that we are not own. Okay? Mm. Accounting treatment for non-controlling interest will be what? As P control S in the consolidated statement of financial position include all of the net asset of S to show control. Show the net asset of S which belong to NCI within the equity section of the consolidated financial statement of financial position in balance sheet basically. It will show in equity section below retained earnings. Okay? Can you come on page number 437, illustration number 1? Yeah. Test your understanding, mom. Yeah, TOS 1. Let's solve test your understanding 1 Hmm. for better clarity what you've learned till now. Okay. We have given Dickens and Johns, financials of Dickens and Johns, non-current asset, current asset, equity, and current liability. Okay? In other information, been given that Dickens acquired 16,000 ordinary share capital, 16,000 $1. $1 is what? The face value. $1 ordinary share capital in Jones on 1st Jan 2008, and our year end is 31st December 2008. Basically, we acquired Jones on day one of our Hmm. financial year. Hmm. Okay? Jones, when Jones RE stood at 20,000 and its share premium was 10,000. Okay? On this date, the fair value of 20% non-controlling shareholding in Jones was 12,500. And why is this given? If you could guess at what method are we going to calculate our goodwill? Fair value. Correct. The Dickens Group uses fair value method to value the non-controlling interest. तभी क्वेश्चन Hmm. में दिया fair value वरना क्यों देते हैं? Hmm. हमें बैलेंस शीट बनानी है, Yeah. ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो मोटा मोटा व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है, बैलेंस उसका बेसिकली रिटेन अर्निंग तक का बैलेंस दिया हुआ है, नेट एसेट दिया हुआ है, Hmm. एंड गुडविल कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट. नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में पीपी है और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जोन दिया हुआ है. ठीक है, देन वी हैव करंट एसेट इज गिवन. 30. Just tell me the amount individually. What is the amount for amount PP in 85,000. in thousand? So अच्छा 85,000 ना, 85 investment in shares 60. 60. See what is the total CA current asset? 160.
160 of both Dickens and Jones. This was for Dickens. Jones Hmm. is PP is 18, Hmm. investment is near, and current asset is 84. 84 Yeah, total assets. 305, 102. ठीक है. इक्विटी. इक्विटी में क्या है? Ordinary हाँ, $1 share, शेयर कैपिटल. ठीक है. share premium, retained earnings. शेयर प्रीमियम. आर ई. देन That's it. दैट्स इट. हाँ, फिर current liability देन है. सी एल. व्हाट इज द बैलेंस फॉर शेयर कैपिटल? 65, हम्म. share premium is 35, retained earnings is 70. That goes total 170, and current liability is 135. 135. हाँ, for Jones टोटल. is टोटल इक्विटी एंड 305. लायबिलिटी. 305 ना. Yeah, What is share capital for Jones? 20, 20. share premium 10, retained earnings 25, total is 55, current liability is 47. 102. Done. ठीक है. ठीक है. Working cost. With cost will be our working one. Calculation of total. ठीक है. What is the purchase consideration? What do you think? What is the purchase consideration? Are we given in question? Have we given anything? नहीं. Look at carefully. Yeah. No, I'm sorry, it's given What is 160. how 160? Purchase consideration, no? Investment in Jones. That is 60, na? Oh, sorry, yeah, that is current asset. Sorry. 60. Purchase consideration is 60. Perfect. हाँ. And we have been given value of NCI, that is 12,500. Hmm. NCI fair value is how much? 12.5. ठीक है. Total purchase consideration how much? This plus less net asset. ठीक है. What is the net asset? Now tell me what would come under net asset. Net asset. Asset minus liability. So what will come? One, What question? What is being given in question? 10,000. 10,000 of share premium. Retained earning is 20,000. Then share capital will same as it is. Hmm. Share capital में तो change नहीं आएगा ना. Hmm. So is equals to 20,000 is equal to 20 plus share premium was how much? 10 plus retained earning was 20. ठीक है. This was our NA. Okay. Right. Hmm. What is the goodwill? This time. Purchase consideration minus. 7. Correct. 22500. 225.5. Yeah. 22.5. 20,500. Hmm. So
What do you think? Investment in share zones will come under consolidated balance? No. And we know the detailed discussion with which we have done. Yes. Goodwill and net assets. Yes. So in exam you don't have to write all this. Just That is for quite my true. sake I have written, but you have to Hmm. write the consolidated balance. So Okay. here it will be this plus this. Then goodwill will be how much is equal to this, and you have to put reference. This is exactly you have to solve in exam with good presentation, lining and bold, etc. Hmm. Okay. So working note one. Anyone who is going to see it will directly refer to work number one, working number one. Okay. Right. Current set would be simply plus plus. There is no adjustment given in question. शेयर कैपिटल किसका आएगा? Oh, one Dickens का करेक्ट. 65. यस यस. व्हाट इज द शेयर प्रीमियम? सेम टेकन. 35. अब रिटेन अर्निंग में हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है. Hmm. वर्किंग टू कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग at acquisition date, at AC date, at reporting date. ठीक है. शेयर कैपिटल कितना था? अब ये रिटेन अर्निंग किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? पोस्ट एक्विजिशन. Consolidated. कंसोलिडेटेड Post बट. acquisition. Post acquisition. तो पोस्ट एक्विजिशन किसका होगा? सब्सिडियरी का ना. सब्सिडरी का हाँ. तो एट 70 एक्विजिशन तो शेयर कैपिटल डिफरेंस कितना हम था? ले लेंगे. 65. नहीं 20,000 ना. अच्छा ओके जोन्स का हाँ 20. बट शेयर कैपिटल नहीं, हम रिटेन अर्निंग देख रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग का था 25,000. ये रहा. हम्म. और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एट द डे ऑफ एक्विजिशन कितना था? 20,000. या तो 20 एंड रिपोर्टिंग डेट पे हमें बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर कितना दिखा? 25. इसका मतलब पोस्ट कितना हुआ? व्हाट डू यू थिंक? 5. पोस्ट रिजर्व कितना हुआ? दिस माइनस दिस. ठीक है. राइट. अब कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, ना कोई डेप्रिसिएशन है, ना कुछ और एडजस्टमेंट है, तो कोई रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट नहीं आएगा. सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन हमें निकालना था. हम्म. मैं निकाल दिया. ठीक है. प्लस इसमें तो एनसीआई भी फेयर वैल्यू पे. इसका मतलब ये जो गुडविल 22.5 है इसमें एनसीआई का भी शेयर है, बट अगर इसमें इम्पेयरमेंट नहीं है तो एनसीआई में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वरना होता. हम्म. ठीक है. क्यों होता? क्योंकि वो फुल गुडविल था, उसके अंदर एनसीआई का शेयर भी था, तो अगर इम्पेयरमेंट आएगा गुडविल पे तो उसका एनसीआई भी तो बेयर करेगी ना उसका गुडविल का शेयर. हाँ राइट. बिकॉज करेक्ट. फेयर वैल्यू से कर रहा है इसलिए. हाँ बट इसमें नहीं है तो इट्स सॉर्टेड, बट वो मैं देख रहा था. ठीक है. रिटेन अर्निंग 70. 70 खुद का तो लेंगे, प्लस 5,000 का. 5 इंटू हाउ मच? हाउ मच डिड वी अक्वायर? यस. हाउ मच डू यू एक्वायर्ड? वी एक्वायर्ड 16,000 शेयर, और टिकन के हैं 65. 20,000. जोन्स के 20,000 शेयर है ना, उसमें से 16,000 भी एक्वायर्ड ना. हाँ 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 क्या कितना आ रहा है? 80%. 80% पोस्ट एक्विजिशन का कैन हमारा है. कैन बी डिफाइन लाइक एडिशनल इंफॉर्मेशन में 20% नॉन कंट्रोलिंग लिखा है. हाँ तो बट जो नहीं, अभी अभी हमने सॉल्व नहीं किया. बोल दो नहीं बोल दो. नहीं ये सोच सकता है कि 20% नॉन कंट्रोलिंग है तो 80% हमारा एक्वायर्ड है.
हाँ ये भी वाइस वर्सा, एक ही बात है। हाँ, राइट। तो 74 विल बी आर रिटेन अर्निंग। हम्म। अब आएगा एनसीआई का पार्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे वर्क नंबर 2। अब एनसीआई भी कैलकुलेट करेंगे। 3 एनसीआई, ठीक है। हम्म। एनसीआई सेम सेम फॉर्मेट, एट एक्विजिशन डेट। बेसिकली एट एक्विजिशन डेट क्या था एनसीआई की वैल्यू? वन वन 12.5। ठीक है, 12। तो 12.5 हम्म। 5,000 एड का एड 20। पोस्ट रिजर्व, उसका भी शेयर है क्योंकि 80% ही अपना है, 20% नॉन कंट्रोलिंग का है। हम्म। पोस्ट रिजर्व इज इक्वल्स टू 5 इंटू हाउ मच, 20%। 20%, या 1। 1,000। तो टोटल एनसीआई कितना हुआ? 13.5। 13.5। ठीक है। यहाँ पे राइट। जाना है, पुट द रेफरेंस इज इक्वल्स टू, कहाँ से अमाउंट पिक किया, यहाँ से। ऑल्सो पुट वर्किंग रेफरेंस, अगर देखना कि हाउ टू कैलकुलेटेड तो चेकर कैन इवेलुएट। राइट। करंट लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्लस प्लस। ठीक है। टोटल इक्विटी लायबिलिटी कितना हुआ? 369। हो गई मैच बैलेंस शीट, 369 और 369। यस। डन। दिस इज द एग्जैक्ट वे यू हैव टू सॉल्व इन एग्जाम। ठीक है, विद अ गुड प्रेजेंटेशन। अभी तो मैंने बहुत जल्दी में किया है। राइट। ठीक है, बट ऐसे ही वर्किंग रेफरेंस, बोल्ड, टेक्स्ट फॉर्म, फॉर्मेटिंग, सब कुछ ठीक करना है। ठीक है। Now you solve illustration number 2. Best example. This will give you clarity of fair value and net asset. वो मैंने already दिया हुआ है in my example. Goodwill calculation under both professional, sorry, proportionate data and fair value method. Done. Done. What is the goodwill in first? For proportion is 24, and for fair value it's 30. Nice. इसका मतलब
नाउ यू कैन से कि अगर सेम एंटिटी पे एनसीआई इन्वेस्ट कर रही है, हम्म तो दे हैव टू पे गुडविल ऑफ 6। इसका हम्म आई मीन एक्सप्लेनेशन तो यही आता है ना कि अगर हम्म प्रोपोर्शन बेसिस पे करें तो इसका मतलब इसमें कोई गुडविल नहीं है, देयर इज नो अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय एनसीआई, इसे 24 है, इसका मतलब पूरा का पूरा ओनर ओन्ड गुडविल है। इन फेयर हम्म वैल्यू द गुडविल अमाउंट इज गेटिंग चेंज टू 30, इसका मतलब 6 का कहीं ना कहीं गुडविल इज पेड बाय एनसीआई का एनसीआई। ठीक है। प्रोपोर्शन। नाइस। Let's understand what is fair value. What is fair value? I mean, without seeing the definition and all, what do you know? Market value, right? हम्म Same. Fair value consideration. To ensure that the accurate, accurate figure is calculated for goodwill, consideration paid must be accounted for at fair value. Just I told you, right? In our example, I was paying 120. So I have to account for fair value when I was हम्म paying 120. ठीक है? Subsidiaries identify net asset and liability acquired must be accounted for at fair for their fair value. अगर व्हाट डू यू थिंक, अगर अगर फेयर वैल्यू पे सब्सिडियरी कन्वर्ट ना करे अपने एसेट्स, तो डोंट यू थिंक हमारा गुडविल जो आएगा अंडरस्टेटेड आएगा, सॉरी ओवरस्टेटेड आएगा। राइट सी, if I'm let's take an example, I'm controlling 100% of the entity, हम्म purchase consideration is 20, हम्म and net assets are there at book value, ठीक है, and book value is 150, book value is let's say 19, ठीक है, they are at book value. So purchase consideration minus net asset is giving me goodwill value of 30. हम्म But when I told कि मैं मुझे गुडविल को फेयर वैल्यू आई हैव टू कन्वर्ट the value of my assets to fair value during acquisition, the fair value is 100. Now my goodwill is 20. इसका मतलब क्या हुआ? If I'm not valuing my asset on fair value at the day of acquisition, the goodwill is that goodwill calculated will be overstated. And नो common इट्स sense, अंडरस्टेटेड ना। नहीं, see, if 30 से 20 हुआ। हाँ, so it's overstated ना goodwill। अगर मैं बुक वैल्यू पे रहूं, मैं फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट ना करूं, तो मेरा गुडविल आएगा 30, बट अगर मैं फेयर वैल्यू पे करूं तो गुडविल आएगा 20। इसका मतलब नेट बुक वैल्यू पे गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं तो गुडविल 10 से ज्यादा आ रहा है, इट मींस हाँ ओवरस्टेटेड। राइट राइट राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इफ टुडे आई गो टू बाय हल्दीराम, हल्दीराम ने अपने असेट्स बुक वैल्यू पे दिखा रखे हैं, बट इट्स अ कॉमन सेंस कि जब परचेस करने जाएगा तो हल्दीराम देखेगा कि इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है। हम्म आपने अपना, फॉर एग्जाम्पल, if I ask you to sell your home to me, and at your time you have purchased your home at 10 lakh dollars, today the market value is 20 lakh dollars, so you will convert your, basically you will put the selling price is 25 to me, or हम्म at 20 lakh, which is the current market value. हम्म आप ये तो नहीं कहोगे ना कि नो, आई हैव परचेज ऑन 10, दिस इज डेप्रिसिएशन एंड माय करंट बुक वैल्यू इज 8 lakh dollars, so you can purchase it at 8 lakh dollars. No, no, you will नो convert your asset value on fair value. राइट। तो वही चीज है कि you will obviously convert your asset value to fair value. उसके बेसिस पे I'll check, अच्छा, this is the net asset, this is the actual net asset amount that is coming,
इसके ऊपर मुझे कितना पे करना है, दैट विल बी माई गुडविल। करेक्ट। right. ऑब्वियसली फेयर वैल्यू पे जाएगा ना, कॉमन सेंस। सस्ते में कौन देगा? Hmm. करेक्ट ना, जो मार्केट वैल्यू उसी पे लिस्ट होगा। Yes, yes. So entire liability and asset will be converted at their fair value. Hmm. Then once we got at fair value, the purchaser will think, "Acha, this is the amount of goodwill. Acha, this is the amount I will pay over and above based upon the brand value of the entity, and the amount which is paid over and above is known as goodwill." ठीक है? So it's Hmm. mandatory to account for goodwill on basically on fair value of assets, converting fair value of assets at the time of acquisition. क्योंकि net book value पे you cannot put on sale. अगर if you did, your goodwill will be overstated. Right. Correct? And this is the Yeah. example how it be overstated. Few more theory part. Cost of calculation, cost of investment. What is the cost of investment? Purchase consideration. इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट कितना आ रहा है? परचेस कंसिडरेशन। कभी कभी क्या होता है कि वी आर पेइंग कैश में भी पे कर रहे हैं, और अभी कभी कभी क्या होता है कि वी से कि अच्छा टुडे योर कंपनी इज इन लॉस, बट in next few years if your company makes profit, this much amount of profit will pay you $1 million more. Hmm. ठीक है? तो $1 million is deferred consideration. करेक्ट? दैट विल बी Right. पेएबल इन नेक्स्ट ईयर। तो Hmm. आज की उसकी, आज आज हमने उसको एक्वायर किया है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? डेफर्ड कंसिडरेशन, उसको बोलते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? दैट वी हैव टू कैलकुलेट, and that will be added in our purchase consideration. For example, a purchase consideration consists of two amounts, cash and deferred. Cash is of 100, deferred is of 1, but that is payable in next year. ठीक है? Right. तो हम उस 1 को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से प्रेजेंट वैल्यू इज अराउंड 0.5. आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकलिटीज ऑफ रेट एंड discounting factor, assuming the PV is 0.5. So today, which is the date of acquisition, purchase consideration will be 0.5 plus 100. ठीक है? Right. नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? सेम प्रोविजन डेफर्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर लॉजिक. डेबिट वुड बी व्हाट? इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन, एंड क्रेडिट वुड बी व्हाट? लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, पेरेंट की लायबिलिटी है जो पे करनी है नेक्स्ट ईयर। अभी कोई कैश आउटफ्लो नहीं गया, हमने उसको परचेस कंसिडरेशन में ऐड करके गुडविल निकाल दिया बिकॉज वो पेएबल था प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है? हमने उसको लायबिलिटी में दिखाना बिकॉज इट वाज पेएबल। अब जब इंटरेस्ट कितना होगा? 0, नेक्स्ट ईयर ही है, तो जितना बचा हुआ दैट इज आर इंटरेस्ट कंपोनेंट, so this will be our liability of next year. Once it is paid, अगर पे किया, debit would be liability, credit would be what? Cash. Correct? वन वन, जब हम फुल्ली पे कर देंगे, इफ द कंडीशन इज मेट, कि अगर अच्छा आपको प्रॉफिट इतना गया, तो देन ओनली विल आर वी गोइंग टू पे ये सब। कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि इन फ्यूचर आपको इन्वेस्टर मिलेगा इक्विटी, at what valuation you have seen in Shark Tank, like they Shark Tank they put conditions while offering them money कि इन फ्यूचर आपको इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए इतने अमाउंट का एट दिस वैल्यूएशन, तभी मैं आपको ये पैसे दूंगा इतने वैल्यूएशन। Hmm. करेक्ट? तो वही होता है डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है? Right. बेसिकली पेमेंट बट कंडीशनल बेस। तो हमने उसका आज प्रेजेंट वैल्यू पे कर दिया, फिर जैसे ही हम डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर हमें सेम रेट पे उसको अनवाउंड करेंगे, वो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बन जाएगा। Credited to liability. Once liability is paid, liability debit, credit cash. Done.
बट डिफरेंस वो ये है कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हम प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे परचेज कंसिडरेशन को, सेम लायबिलिटी भी हमारी बुक्स में दिखा देंगे, पेरेंट की बुक्स में। बेसिक इन कंसोलिडेशन भी दिखाएंगे कि डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल, कंसोलिडेशन में भी, क्योंकि वो पेरेंट की लायबिलिटी है ना, सब्सिडियरी की नहीं है ना। वंस इट पेड रिवर्स हो जाएगा, हम्म ऐसे कैलकुलेशन। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन वी आर पेइंग मनी, फॉर एग्जांपल, कभी कभी वी वी हैव टू इनकर लीगल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अकाउंटिंग कॉस्ट, वैल्यूएशन कॉस्ट, क्योंकि ये इजीली ऐसे परचेज नहीं हो जाते, ऐसे कि कंपनी आज बोला कल परचेज कर दिया। लॉट ऑफ वैल्यूएशन टीम वर्क इज बीन डन, लीगल कॉस्ट इज बीन डन, कि कोई लीगल केस नहीं, हम लीगल अथॉरिटीज, लीगल बेसिकली लॉयर्स की भी हेल्प लेते हैं कि हम ये परचेज, कंपनी परचेज कर रहे हैं तो कोई इस पे कोई लीगल केस, आई मीन इसका कोई नॉन कम्प्लायंस तो नहीं है, लीगल केस तो नहीं है इसके ऊपर कोई चल रहा। तो हमें जो लीगल फीस पे करनी पड़ती है, अकाउंटिंग फीस पे करनी पड़ती है, इसका वैल्यू करवाया हमने, फिक्स एसेट का वैल्यूएशन निकलवाया, तो इसका जो वैल्यूएशन कॉस्ट होगा, दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम एक्वायर कर रहे हैं उसका ही कॉस्ट है ना, ये खर्चा। हम्म तो दैट इज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स व्हाट स्टैंडर्ड से। कॉस्ट सच एज लीगल एक्विजिशन, वैल्यूएशन, तो अदर प्रोफेशनल फीस, अगर कुछ अदर प्रोफेशनल फीस लगी है, फॉर एग्जांपल लीगल हो गया, फंड फंड नहीं है तो डेफर्ड के लिए लोन ले लिया, करेक्ट राइट, right तो वो भी कॉस्ट हो सकता है। तो दैट शुड बी रिटन ऑफ एज expense through profit and loss as incurred. The issue cost of debt associated with the acquisition should be recognized as per IAS 932. बेसिकली कभी कभी ये भी होता है कि परचेस कंसिडरेशन कैश में नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी के शेयर ले लो, हम्म मैं आपके शेयर परचेस कर रहा हूँ, बट इतनी वैल्यू के मैं मेरी कंपनी के शेयर भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, ये बॉन्ड आपके हो जाएंगे, करेक्ट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम्म तो कहीं ना कहीं क्या हो गया इसका मतलब कि मैं एक्विजिशन में कैसे पे कर रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड या शेयर्स। तो वही कह रहा है कि अगर वही जैसे इन IFRS 9 वी लर्न ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इशुएंस कॉस्ट, और जिस मेथड पे इस हिसाब से वी यूज टू अकाउंट अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, पीएनएल है तो पीएनएल में जाएगा, अमोर्टाइज कॉस्ट है तो कैपिटलाइज हो जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा, करेक्ट। तो right उस टाइम पे इशू करने की कॉस्ट आएगी, हम उसको हमारे बुक्स में, क्योंकि हम बीइंग बीइंग एन पेरेंट हम इशू कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगा डेट विल कम अंडर IFRS 9, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं हमारे शेयर, जो इशू कॉस्ट आ रही है डेट विल बी अकाउंटेड एज पर IFRS 9, पूरा पूरा ट्रांजैक्शन। यू गेटिंग क्या, प्रैक्टिकल वे में समझ आ रहा है व्हाट इज बीइंग हैपनिंग, हम्म अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑल्दो ये बहुत शॉर्ट वे में दिया होगा, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, yeah कि कंसिडरेशन कैसे पे हो रहा है, शेयर्स में पे हो रहा है, कैश में पे हो रहा है, डेफर्ड कंसिडरेशन में पे हो रहा है, कंडीशनल बेस्ड पेमेंट है क्या, किस तरीके का परचेस कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर कोई शेयर से बेसिकली फाइनेंशियल असेट ट्रांसफर हो रहा है ना, बेसिकली दैट विल बी कंसीडर्ड एज, दैट विल बी ट्रीटेड एज पर IFRS 9, ठीक है। okay और उसका इशुएंस कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज पर IFRS 9 ही होगा, हम्म ठीक है। थोड़ा और डिग डाउन करते हैं ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन। Deferred consideration is what? Is that a promise to pay an agreed sum on predetermined date in the future. Agrees to pay some agreed amount on a future date. This should be measured at fair value at the date of acquisition, taking account of time value of money. समझ आ गया क्या करना है? yeah Fair value of any deferred consideration is calculated by discounting the amount payable to present value. Calculation interest cost will go, and P&L वही आएगा. Any contingent consideration should be included in fair value, which will be given in the exam. Exam में दिया होगा. Contingent consideration is a future payment to be made provided certain condition are met. This condition vary depending upon terms of settlement. क्योंकि इस तरीके कंडीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। हम्म
Let's solve this question. Jack acquired 24 million $1 shares, 80% of ordinary share capital of Becky. क्वेश्चन में दिया हुआ 80% है जैक का। जैक ने परचेज किया है बेकी का 80%, विच कम अराउंड 24,000। अगर कोई बोले आपको कि 24 million is 80%, can you calculate what will be the 100% then? Just wondering. If somebody tells you कि 24 million 80% शेयर है तो 100% कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 30. कितने हैं? 30। 30, हाँ 30. 24 divided by 80%. हाँ. Okay, what is being asked in the question? Calculate cost of investment. Show journals to record in Jack's financial statement, basically who is the acquired parent company. Show how the discount would be unwound. What is unwound? Discount unwound? Interest cost. Hmm. ठीक है? Okay, let's read. 24 million $1 share, 80% of Becky by offering a share for a share exchange. क्या है? By offering share for share Share exchange exchange. Right. of 2 share for every 3 shares acquired in Becky. Hmm. ठीक है? And a cash payment of $1 per share payable 3 years later. ठीक है? $1 per share acquired 3 years later पे करना है 3 साल बाद. Jack share has nominal value of $1 and the market value is $2. Jack के share की value और cost of capital दिया हुआ 10% and the value of $1 receivable in 3 years time would be basically discounting factor भी दिया हुआ 0.75. ठीक है? Hmm. Okay. First one. शेयर्स में पेमेंट हो रहा है. शेयर्स का कितना पार्ट है? How much we acquired? 24,000 shares. 24 million. So I'm converting in thousand. So 24,000 into how much? Two share. $1. No, 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 no. 2 share. मेरे को तो अभी तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, फिर मैं उसके शेयर्स के प्राइस पे मल्टीप्लाई करूंगा कि कितना पेएबल हाँ. जाएगा. तो Right. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 24,000 है. हाउ मच आई एम ऑफरिंग? टू 2. शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स आई एम एक्वायरिंग. इसका मतलब इंटू 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि मैं इंटू 2 शेयर्स डिवाइड बाई 3 कितने शेयर्स मैंने एक्वायर किए हैं इंटू 2. Hmm. Hmm. तो 16,000 आई एम ऑफरिंग माई शेयर. ठीक है? जैक Hmm. अपने शेयर ऑफर कर रहा है बेकी को, अपने खुद के 16,000 शेयर उसके. और जैक की शेयर की प्राइस वैल्यू क्या है? 2. तो कंसिडरेशन कितना हुआ शेयर्स में? 32,000. Right. ठीक है? Yeah. नाउ डेफर्ड. नाउ डेफर्ड कंसिडरेशन. $1 पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए कितने हैं? 24. एक्वायर 24. ठीक है? हाउ मच आर वी गोइंग टू पे? $1. $1. दिस इंटू दिस. बट ये कब पे करना है? 24,000 3 साल बाद. Hmm. ठीक है? उसके प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75. तो आज की 24,000 की वैल्यू है 18,000 रुपए, बेसिकली Right. $18,000. So total PC would be how much? 50. 18,000 plus 32,000. So this is the cost of investment, purchase consideration. Hmm. ठीक है? Now second question is how the in discount would be unwound. What is the present value? Day वन पे हाँ, और उसकी जर्नल एंट्री भी दिखानी है. तो what will be the journal entry? You tell me the journal entry now. What is the journal entry for recording liability? First, deferred liability will go to credit. Debit में investment आएगा. Yes, yes. Deferred cost of investment, correct. At 50. Go ahead, go ahead. Credit would be liability that you told. That will be at 18. 18. हाँ. फिर Then then what?
we issued share, equity increase, करेक्ट ना? हम्म. शेयर्स कितने इशू किए? 16,000। और उसकी हाँ. वैल्यू क्या थी? बेसिकली नॉमिनल वैल्यू, जैक की नॉमिनल, क्योंकि ये शेयर्स की वैल्यू कहाँ जाएगी? इक्विटी में जाएगी, और इक्विटी में हम क्या दिखाते हैं? इक्विटी शेयर्स एट नॉमिनल वैल्यू। तो 16,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया? जैक शेयर है 1. नॉमिनल वैल्यू 1, so it would be 16. Now one more thing, क्योंकि शेयर अच्छा. प्रीमियम पे दिए ना, हाँ. राइट. $1 के शेयर $2 में दिए, हम्म. करेक्ट? तो 16 हम्म. का वापस आ गया प्रीमियम। कैसे राइट. आया? 16,000। और प्रीमियम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस 1 है. 2 - 1। 1. ठीक है। राइट. गॉट इट. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, इंटरेस्ट का अनबाउंडिंग कॉस्ट कैसे लगेगा? 18,000 इज माई करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि 3 years बाद पे करना है, दैट इज माई नॉन करंट लाइबिलिटी मोर देन 12 months। हम्म. इंटू 10% इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1800। 1.8. हाँ, डिवाइड बाई 1000, 1000 में कन्वर्ट किया 1.8। हाँ. एक ही बात है. ठीक है। तो डेबिट वुड बी व्हाट? माई इंटरेस्ट एक्सपेंस। टू एनसीएल. हाउ एनसीएल? टू लायबिलिटी ना, डेफर्ड कंसिडरेशन लायबिलिटी। बात तो एक ही हुई ना. नॉन करंट लायबिलिटी है. अच्छा, यू आर सेइंग एनसीएल, आई थॉट एनसीआई, नॉट। नो, नो. ठीक है, हाँ हाँ, then you are right. ठीक है, डेफर्ड कंसिडरेशन लायबिलिटी। हम्म. नेक्स्ट ईयर सेम एंट्री वापस बनेगी, हम्म. नेक्स्ट टू वन नेक्स्ट ईयर भी पॉइंट सेम। एट इंटरेस्ट हुआ. कब तक चलेगा ये? 3 साल तक। 3 साल तक. हाँ. वन पॉइंट ठीक है। एट इंटरेस्ट. 5.4. तो आज की डेट में लायबिलिटी क्या बन गई? एट द रिपोर्टिंग डेट, टोटल लायबिलिटी अमाउंट। 18. 9. नो, 18। यहाँ पे अगर 1.8 की एंट्री पास करी है और लायबिलिटी दिखा रहा हूँ, तो 18 प्लस 1.8 ना, तो 19.6 इज माई लायबिलिटी ना, एट रिपोर्टिंग डेट। फिर नेक्स्ट ईयर इसी पे कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट, हाँ. इंटू हाउ मच? टेन परसेंट एवरी ईयर डिस्काउंटिंग 1 to 9.8। तो फैक्टर प्लस दिस, बढ़ती जाए. टोटल लायबिलिटी कितना हुआ? ठीक है। हम्म. थर्ड ईयर में भी सेम होगा, करेक्ट? टोटल लायबिलिटी कितनी हुई? 2.958। इसका मतलब 24. क्या? 24 आ गया। 24 लिखा है. 24,000, इसकी डेफर कंडीशन 24,000। एक राइट. डॉलर पर शेयर पे करना था, 24 वॉज पेबल इन विद इन 3 years। आ गया 24। अब हम्म. जैसे इसको पे करेंगे, तो डेबिट वुड बी व्हाट? लायबिलिटी। टू कैश. क्रेडिट कैश। जैसे इसको रिवर्स मारा, डन, लायबिलिटी वुड बी डी रिकॉग्नाइज, खत्म। डन. ठीक है, वैसे पूछा नहीं था क्वेश्चन है, बट हमने कर दिया। पोस्ट एक्विजिशन की वैल्यूएशन। So this will be the last topic for today, post acquisition ओके. reserve. Then we'll continue tomorrow to complete the consolidation. ठीक है? Post acquisition revaluation, you know already, post acquisition, हम्म. post acquisition profits क्या होते हैं? रिजर्व्स. Reserves what? लाइक रिटेन्ड अर्निंग. Yeah, but post acquisition means what? Profits after acquisition, right?
हाँ, profits that subsidiary earns या after we या आफ्टर वी acquire it. एक्वायर। Yeah. सेम रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा फिर, कि हमारे खरीदने के बाद सब्सिडियरी के एसेट्स में कितना रिवैल्यूएशन हुआ, Revaluation आया, हाँ. उसके शेयर उसमें से हमारे शेयर्स का होल्डिंग हमारा होगा, बाकी का परसेंटेज का जाएगा एनसीआई, Right. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। Hmm. ठीक है, बस वही लॉजिक है। P owned 80% of S for many years. During the current year, P and S both revalued their property for the first time. Both property increased by $100,000। तो Hmm. रिवैल्यूएशन कैसे शोन होगा, असेट बढ़ जाएगा, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, पर सरप्लस कितना होगा, 100 × 80%। Hmm. ठीक है, बेसिकली एस का खुद का तो होगा ही, तो खुद का 100 प्लस सब्सिडियरी का 80%, दैट इज 180। Hmm. एनसीआई में NCI सब्सिडियरी का का 20%, 20। 20%. डन। Right. Done. So this is post acquisition revaluation. What if accounting policies? We already did this in first chapter, but ठीक है। All group companies should have same accounting policies. We know क्योंकि अगर different accounting policy है, we have to convert do same accounting Parent. policy as per parent. If a Parent. Yeah. group member uses different accounting policy, its financial statement will be adjusted to achieve consistency before they are consolidated. Correct? Hmm. We Hmm. have to achieve consistency of accounting policy before they are being consolidated. Second, this is achieved by how? Adjusting the relevant asset and liability in the subsidiary's individual financial statement prior to adding across line by line basis. Adjust करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेट बुक कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड किया था पीपी एट 100, पेरेंट वाज डूइंग एट रिवैल्यूएशन, तो हमें उसका प्रेजेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है असेट की, सब्सिडियरी की। If it's 120, then subsidiary has to account debit asset credit revaluation reserve 2020 to maintain consistency. Then add line by line. Done. Yeah. Perfect. Perfect. ठीक है, then we'll continue from intra group trading from tomorrow, Okay. which is basically purchase sale between parent and subsidiary. Okay. ठीक है, how are we going to account those transactions that we are going to learn tomorrow. So, okay, we are wrapping session for today. We'll continue tomorrow and complete the consolidation. Okay. Okay. Thank Till you. then, goodbye. Take care. Bye. Thank you.